पंकज सदरे जी। पति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित मत संख्या 13 की हिंदी और अंग्रेजी की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 14 से सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement mentioned against my name at serial number 14 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 379th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Tourism. Thank you, sir. धन्यवाद जी। माननीय सदस्यगण, कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शून्यकाल है। शून्यकाल के विषय जो आज के लिस्टेड है उस विषय को आज लिया जाएगा। कृपया आप सब लोग बैठिए प्लीज। कृपया बैठिए प्लीज। शून्यकाल है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। शून्यकाल है। शून्यकाल सभी माननीय सदस्यगण का देखिए। शून्यकाल को चलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल को चलने दीजिए प्लीज। शून्यकाल के बाद आज जो लिस्टेड है 0 आवर में केवल वही माननीय सदस्यगण बोलेंगे। आप लोग भी बैठिए प्लीज। सभी लोग बैठ जाइए प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से आप शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या आप? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल ऐसा नहीं करते जी। ये तरीका भी ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। मिस्टर वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सब लोग बैठिए। जो विषय उठाया है आपको मौका बाद में मिलेगा। अभी कृपया ये शून्यकाल को चलने दीजिए। प्लीज बी सीटेड। प्लीज भी आप सभी से विनम्र निवेदन है। आप सब लोग बैठिए। ये तरीका भी ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी सीटों पर जाकर बैठिए प्लीज बी सीटेड इन योर सीट। प्लीज बी सीटेड। इट्स नॉट गुड। प्लीज बी सीटेड। नो प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज। आप बैठिए प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग टू एनीबॉडी। प्लीज बी सीटेड। ये तरीका ठीक नहीं है। ये गलत है। सदन को चलाना पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दोनों का जिम्मेदारी है। आप सदन चलने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। प्लीज। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 0 hour is very important for each member, for the people of the country. Please help to run the house. Please help to run the house. मैं शून्यकाल माननीय वेणुगोपाल जी, just listen to me, just please. I will allow to speak after the listed 0 hour. I will allow you after the 0 hour. I will allow Venugopal ji, please. I will allow लिस्ट के नामों के पुकारने के पश्चात मैं देखूंगा कि किस मान्य सदस्य ने मौका देना है। आपको भी मौका दिया जाएगा। आप प्लीज भी सीटेड। ऐसा नहीं चलता है जी। नो इट्स नॉट गुड। प्लीज भी सीटेड। वेणुगोपाल जी, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। आप शून्यकाल भी नहीं चलन देते। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अपोजिशन
दे विल सिट, दे विल सिट। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए प्लीज। नहीं नहीं, ये लोग भी बैठेगा। ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। वेणुगोपाल जी, आई एम आस्किंग यू, but you will be allowed, जिन जिन माननीय सदस्यों का यहाँ पर 0 वर्ड बोलने का है, बोलने के बाद हम इसको विचार करेंगे। आप बोलेंगे उसमें। प्लीज बी सीटेड, ask all members to be seated in your respective seats, please please please। आप जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी। 0 आवर चलने देना है। अगर 0 आवर भी आप चलने नहीं देता है तो सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूँ। जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री ने ही सोच करके पीएम विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया है और पीएम विश्वकर्मा में भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को अवगत करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। महोदय, टारगेट हम लोगों का है कि 30 लाख लोगों को 2028 तक हम लोग लाभान्वित करेंगे। अभी 12 लाख लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जो प्रश्नकर्ता हैं उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ावें, उनको कैसे पलायन रोकें, यही तो MSME का उद्देश्य है हुजूर। और इसी के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और डाटा उनको बतलाया है। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से और हमारे सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आम लोगों को कि MSME गरीब लोगों को, खास करके वैसे लोगों को जो हजाम हैं, वो रास्ता पर बैठ करके हेयर कटिंग करते हैं या शेविंग करते हैं। वैसे लोग जो भाई चर्मकार हैं वो चप्पल सीते हैं बैठ करके सड़कों पर, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों को भी किया है कि हम 15,000 रुपया बिना सूद के एकदम दे देंगे कि ताकि आगे काम बढ़ो। तो कहने का मतलब हमारे MSME में ऐसे ऐसे अनछुए लोगों को, जिसको आज तक कोई बढ़ाने का काम नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी का कल्पना है और उसी के माध्यम से MSME में आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने किया। उनको धन्यवाद देते हैं और पुनः हम दोहराते हैं कि उनका ये सजेशन बहुत अच्छा है कि निकट भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुला करके, विशेष करके कोकण के संबंध में, महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। Sir, multiple policy studies indicate
that nearly 86% of manufacturing MSMEs remain unregistered, with only a small fraction covered under GST or income tax system, leading to serious credit exclusion due to lack of reliable data and outdated underwriting practices. In this context, could the Minister explain the why single window clearance and registration mechanism have not reduced procedural delays as intended, and what immediate steps are being taken to simplify the registration so that MSMEs can formalize fasting and gain timely access to institutional credit? Honorable Minister. हाँ महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जीएसटी की चर्चा की, सबसे पहले उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमएसएमई का संबंध है और एमएसएमई में छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स का काम होता है, इसमें जीएसटी का बहुत कोई महत्व नहीं होता है, जीएसटी उन पर लगता ही नहीं है। और रही बात इस चीज़ को आगे बढ़ाने का और उसके माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात और फिर अन्य बातों की चर्चा किया, उसी के लिए तो हम पूर्व में अपनी बातों को कहा कि हम लोगों का ये उद्देश्य ही है कि गरीब लोगों को हर तरह से उनको जॉब दे करके आगे बढ़ावें। और बैंकों का जहाँ सवाल है हुजूर, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपया तक के बिना बैंक गारंटी के, बिना सूद के हम लोग लोन देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। 2 लाख जब होता है तब फिर बैंक गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ 4% सूद पर उनको आगे का काम करने के लिए बात देते हैं। तो उसमें जीएसटी का जहाँ तक सवाल है बहुत मिनिमम नॉमिनल लगता है, जिससे कि हमारे इंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं हो और उनको हम फैसिलिटेट कर सकें ताकि अपना उद्योग को आगे बढ़ावें और अपना अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें महोदय। यही इसका हमारा कहना है। जवाब। 4th supplementary, Dr. Bhim Singh जी। महोदय, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, इनके अंदर हम मंत्री रहे। कोंकण अपना बड़ा भारत का प्यारा क्षेत्र है, सुंदर क्षेत्र है, उधर जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह बताएगी कि 27 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों और एमएसएमई क्लस्टरों में सामूहिक हरित क्षेत्र कॉमन ग्रीन कवर मॉडल को लागू करने के लिए अब तक कितने औद्योगिक स्टेट या क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और उनकी क्या प्रगति है? सभापति महोदय, ये बात सही है कि 27/10/20 को जो एम जारी किया गया था वो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया गया था और उस समय तक 33% ग्रीन पट्टी की बात होती थी और फिर उसी को रिवाइज करते हुए 29/10/25 को एम जारी किया गया। उसमें थोड़ा ये समझ करके कि 33% बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिड्यूस किया गया, तो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 10% और इंडिविजुअल यूनिट के लिए किया गया है वो 15% है रेड के लिए और 10% है ऑरेंज के लिए। रेड और ऑरेंज का हम डिफिनीशन बताने का काम किया है हुजूर। और जहाँ तक ग्रीन और वाइट का है तो वहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, वो जैसा भी है जितना ज़मीन वो छोड़ सकते हैं लगा सकते हैं, ये है। और जहाँ तक कितने लोगों को हम लोग लाभान्वित किया, खास करके कोंकण की बात करते हैं, हम इतना जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया था हुजूर और जिस प्रकार से माननीय सांसद भीम बाबू बोल रहे हैं, तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए और पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर पहली मीटिंग कराना होगा तो हम कोंकण स्टेट में ही जाकर करेंगे ताकि और इससे इस बात को हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे और कोंकण की समस्या को दूर कर सकेंगे। 5th सप्लीमेंट्री, श्रीमान सुभाषिष कुंदिया जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on supplementary question after 20 months. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उड़ीसा के विशेषकर पुरी में कितने लोग एमएसएमई में बेनिफिट हो रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र से बेनिफिट हो रहे हैं? थैंक यू सर। महोदय,
ये प्रश्न तो मूलतः समस्त भारत से और ख़ास करके कोंकण के जहाँ तक था सवाल और जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, तो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है, हम इनको बाद में उसका प्रश्न का उत्तर भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 152 श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। Honorable Minister. Sir, the answer has been placed on the table of the House. The first supplementary, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एयर सेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए औसतन कितना समय लगता है और कुछ एयरलाइंस द्वारा शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी भी हो जाती है। यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई की गई है, वो माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं एयर सेवा की अगर बात करूं तो एयर सेवा की शुरुआत 2016 साल में की गई थी कि पैसेंजर्स के तहत एक इनिशिएटिव के साथ जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर के पास ही ना जाए, बल्कि मिनिस्ट्री भी उनके ग्रीवेंस एड्रेसल में वो सपोर्ट करके करे। इस भावना के साथ हमने नवंबर 2016 में ये एयर सेवा की शुरुआत हुई और एयर सेवा की 3 वर्जन्स भी हो चुके हैं। जैसे जैसे हमें पैसेंजर से फीडबैक मिलता गया तो इसको और बेहतर कैसे करें, इसके अलग अलग वर्जन्स, तो एयर सेवा 1.0, 2.0 और अभी 3.0 का मैकेनिज्म चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हमारे इन्वॉल्व हैं। जैसे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तो होंगे ही, उसके बावजूद भी DGCA जो हमारा सेफ्टी रेगुलेटर है, BCAS जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, इमिग्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स, हेलीकॉप्टर डिवीज़न भी है, जिनके साथ भी इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके संबंध में ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, मंत्रालय के साथ, ये एयर सेवा के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट इसी के लिए बनाया गया। जो प्रश्न भी उन्होंने आदरणीय सांसद जी ने पूछा कि कितने समय में होता है या फिर उसमें क्या कार्रवाई होती है, तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक बनता है ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। और जो भी विषय एयरलाइंस के संबंध में हो या एयरपोर्ट के संबंध में हो या इमिग्रेशन के संबंध में हो, जो भी विषय उठाया जाता है उस सब का हमने डिफाइन कर दिया है कि कितना समय में उन सबको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक दो का अगर उदाहरण मैं दूं तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारा DGCA के साथ अगर एयर वर्दीनेस के संबंध में है तो उसमें जाहिर किया हुआ है कि 15 डेज़ के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। अगर पैसेंजर राइट्स की बात आती है और एयरलाइंस में डिलेस हो तो 1 दिन के अंदर, या फिर टिकटिंग या फेयर या रिफंड की है तो 15 डेज़ के अंदर। सो ग्रीवेंसेस जो भी एयर सेवा के तहत हमें आते हैं सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपके जो इस तरीके के ग्रीवेंस आएंगे तो इतने दिन में वो कर देना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं करते या वो टाइम लिमिट वो मेंटेन नहीं करते या वो ग्रीवेंस को उस दिन के अंदर वो एड्रेस नहीं करते तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर इंक्वायरी करती है और तुरंत एक्शन भी लेती है कि क्यों नहीं किया, और उसके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स को उनके साथ वो कंसल्टेशन में वो प्रोसेस होता है। सर सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू सभापति जी। सर, मैं उत्तरी गुजरात महसाना से आता हूं और पूरे उत्तर गुजरात और राजस्थान के सटे जिलों से मैंने पहले भी ये मांग की थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत महसाना से बम्बई का कोई प्लेन सेवा शुरू की जाए, मगर क्योंकि उत्तरी गुजरात में व्यापारी मथक है, वहाँ से टूरिज्म भी डेवलपमेंट है और राजस्थान के सटे जिलों से लोग बम्बई में और बम्बई से आगे भी रहते हैं, तो पूरे उत्तरी गुजरात को कनेक्ट करने के लिए हमको अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि उड़ान योजना के अंतर्गत अगर महसाना से मुंबई का एयरवेज शुरू की जाए तो आने वाले दिनों में एक टूरिज्म क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो टूरिज्म से देश में आमदनी और रोजगारी पैदा होती है तो उसके लिए ये एक बड़ा माध्यम होगा और एयर सेवा शुरू होने के कारण ये लोगों को रोजगारी भी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी ये पूछना है कि एयर सेवा ये कब तक शुरू हो सकती है? माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
सर, मेहसाना इज़ अवेलेबल इन दी उड़ान की जो स्कीम है उसमें मेहसाना भी अवेलेबल है, पर जो उड़ान की जो स्कीम की जो मूल भावना है कि जहाँ पे भी एयर स्ट्रिप्स है, ये जो पट्टी है, हवाई पट्टी है, उसको हम किस तरह से हवाई अड्डा बनाकर वो सर्विस वहाँ से हम फैसिलिटेट करें। तो हवाई स्ट्रिप को हवाई अड्डे के लिए बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की भी ज़रूरत है, जो हम राज्य सरकार से हम कंसल्ट करते हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर एक तरह के एयरक्राफ्ट को चलना है तो मिनिमम उतना हमें एक रनवे की ज़रूरत है। अगर एयरबस चलना है तो करीब 2400 मीटर्स की, अगर ATR चलना है तो 1800 मीटर्स की मिनिमम हमारी एयर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है। और एयर स्ट्रिप्स क्योंकि काफ़ी हद तक वो ब्रिटिश के समय वो सब बने हुए थे, कुछ 1 किलोमीटर तक ही हैं, 1000 मीटर तक ही हैं, तो उनको एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है। उड़ान डॉक्यूमेंट में ये लिस्ट किया गया है कि मेहसाना हम डेवलप करेंगे, बट इसका एक और प्रोसेस है कि हम एयरलाइंस को भी बिड करने के लिए देते हैं ये रूट के लिए। अगर मेहसाना मुंबई की अगर डिमांड हो या मेहसाना अहमदाबाद या मेहसाना दिल्ली, तो कोई भी अगर एयरलाइंस बोलता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक हम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी एक इनिशिएटिव मिल जाता है कि एयरलाइंस ऑलरेडी रेडी है तो हम उस हवाई पट्टे को भी डेवलप करें। तो एक एयरलाइंस को रेडी होना चाहिए, दूसरा राज्य सरकार को ज़मीन भी देना चाहिए कि उस हवाई पट्टे को हम हवाई अड्डा बनाने के लिए ज़मीन दें। थैंक यू सर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर सेवा पोर्टल है ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लेकिन क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बहुत सारे पहली बार एयर फ्लायर्स आए हैं जो पहली बार पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को लेकर क्या कोई सरकार ने कदम उठाया है और प्रभुत्ता से वो राइट्स डिस्प्ले हो सकें, चाहे वो ऐप के माध्यम से या उनकी सीट के पीछे, क्योंकि एयर क्रूज को तो अपने राइट्स पता हैं लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और वो उनको भाषा का भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या वो पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनको क्या टिकट रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में क्या सरकार की क्या नीति? धन्यवाद। चेयरमैन सर, सबसे पहले में तो मैं आदरणीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि एयर सेवा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है कि अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई असुविधा होती है या कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके तहत वो कर सकते हैं। बट हमारे मंत्रालय से DGCA से हमने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जो कार से जाना जाता है, तो कार्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो पैसेंजर को अपने राइट्स बताते हैं। बट ये कार सारे बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स ये इनकी जानकारी नहीं होती। तो ये अहम सवाल उठता है कि हम कैसे अवेयर करें पैसेंजर्स को कि अपने राइट्स ये हैं, या कोई भी एक सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में या उस डिस्ट्रेस में या उस दिक्कत वाली सिचुएशन में उनको क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं वो पैसेंजर को। इसी के तहत DGCA ने जो कार बनाए हैं पैसेंजर्स के हिसाब से कि अगर डिले होता है तो पैसेंजर के राइट क्या है, अगर कैंसिलेशन होता है तो किस तरह से एयरलाइंस उनको रिफंड करना चाहिए, अगर डिले ओवरनाइट होता है या कुछ लंबे समय तक होता है तो उनको होटल एकोमोडेशन किस तरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड आउट कार्स में है। बट फॉर दिस सेम इनिशिएशन की इसको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाएं, हमारे मंत्रालय से हमने पैसेंजर चार्टर, एक डॉक्यूमेंट अलग से जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको भी हमने बनाया है, पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसमें क्लियरली ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को भी मैं बताना चाहूँगा जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं, और इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो कार है वो जनरली जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है, तो ये इसके लिए बना है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी है और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स में वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस भी रहता है। तो उनको अगर हम कार्स वो पहले से ही अगर बताएं, उनके राइट्स वो पहले से ही अगर बताएं, तो उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो सकती है। तो इसी में एक जो जिस तरह से कंटेंट्स हमने बनाए कि फ़्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिलेशन, बोर्डिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग या फ्लाइट डाइवर्शन भी हो, कैंसिलेशन चार्जेस, लॉस, डिलेड और डैमेज्ड बैगेज, में कुछ ही टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, और काफ़ी कॉमन मैन को किस तरह समझाना है। सिनारियोस इसमें बने हुए हैं कि एक सिनारियो है, यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइंस एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर, 3 hours or more, 4 hours or more, then what is your right? Your right is you must be offered free of charge meals and refreshments in relation to the waiting time. तो ना केवल कार को हमने दिखाया है, सिनारियोस भी हमने बना के एक्सप्लेन किया कि किस सिनारियो में आपको किस तरह के राइट्स अवेल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो ये पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट है
हर कस्टमर, हर पैसेंजर ये एयर ट्रैवल करने से पहले इसको पढ़े और हमारी तरफ से जो भी कार में अपडेट करते रहते हैं उस कार के अपडेट्स को भी इस पैसेंजर इसमें भी अपडेट करके ये अपडेट करें। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए, ये जितना हो सके ये हम पैसेंजर्स को अवेयर करें, ये हमारी तरफ से एक प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संतोष कुमार पी। Thank you, sir. Recently, on 6th of December, there was an order issued by the Civil Aviation Ministry to regulate the airfares. So, para number 1 speaks about the fare limit. This order will be applicable for travel till the fare stabilizes. So, what do you mean by the stable price in airfare? Number 1. 2. Will this order applicable Onam and other seasons also? Onam, Christmas and other seasons also? सर, ये एयरफेयर से संबंधित एक प्रश्न है। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एयरफेयर्स एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट एयरफेयर्स, the surge in air prices that you see is generally because it is a deregulated sector when there is a mismatch in the demand and supply. When the demand becomes too high, then the seats that you can supply in the market, that is when the airlines, with their models of the air pricing, they tend to rise, and that is why exactly the honorable member was also mentioned during Onam or during the festivals, not only in Kerala, but you observe this in North India during Diwali also. And when it comes back to this capping of prices, airfares during the 6th of December. We all are aware with the Indigo crisis that has happened, and we all know how much distress it has caused. And one major thing that has happened during that time is the capacity constraint at which Indian aviation was operating. Indigo being the major airline and their operations being curtailed, there was a huge disruption, huge cancellation of the regular flights that were there. So the capacity has come down. The seats that people can use to travel has come down. So generally, the other side of the trend would be the airfares would rise. That is exactly why we have to keep the cap, to keep the airfare at a very reasonable and affordable way. We have capped the prices. And regarding the other seasons that might come up, other times when the airfares might rise, the ministry is closely observing all these seasons. We are continuously engaging. We are continuously engaging with the stakeholders on this, and whenever there is a situation, whenever there might be a situation when this is there, we from the ministry are taking action, and I will give you other examples also. During Kumbh Mela we have done it, during Pahalgam incident we have done it, during COVID also we have done it. So whenever there might be a situation when the airfares might rise, the ministry is acting upon it and taking the necessary action. Fifth supplementary, Shriman Pramod Tiwari ji. मैं आभारी हूं आपका। माननीय मंत्री जी के जवाब से उपजा हुआ एक सवाल और एक सुझाव। इधर मोनोपोली की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ, अब मेंबर पार्लियामेंट यहाँ बोले ना बोलें, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव सामान्यता, चूँकि उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से उनका बर्ताव उतना संतोषप्रद नहीं होता जितना होना चाहिए पैसेंजर के साथ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपसे, क्या एक एडवाइजरी जारी करेंगे सामान्य पैसेंजर के साथ, और जो सांसद अपनी पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों को सांसद लोग निर्वाहित करते हैं, उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, जो चूँकि आपने जवाब दे दिया है कि ये जो लूट होती है त्यौहार पर, या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आई थी तो दूसरे पैसेंजर से 5 गुना 6 गुना किराया था, 50-50, 60-60 हज़ार, 80 हज़ार। तो इस पर महाकुंभ के दौरान बेंगलोर से 65,000 रुपये का टिकट था, मैंने उठाया था सवाल। तो मैं आग्रह करूंगा, क्या
आप नियंत्रित करेंगे इस किराए की लूट को और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे आप इस कंपनी को जिसका नाम इंडिगो है। चेयरमैन सर, ये सवाल काफ़ी सांसदों के मन में भी रहा होगा और ख़ास करके जनता में भी, और इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, एयरलाइंस की जो फ्रंटलाइन स्टाफ ही नहीं, एयरलाइंस पे आप एयरपोर्ट पे भी अगर देखेंगे या फिर एयर ट्रैवल के संबंध में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें जो इन्वॉल्व हैं एयर ट्रैवल में। आपके एयरलाइंस के स्टाफ हो गए, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ हो गए, बैगेज के संबंध में स्टाफ हुए, CISF जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंग है हमारे एयरपोर्ट में सेफ ऑपरेशंस के लिए। और हमारे तरफ से ये प्रयास रहता है कि जो भी टच पॉइंट्स हैं, एक पैसेंजर को जो भी टच पॉइंट्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं, CISF के साथ या फिर चेक इन काउंटर के पास या सिक्योरिटी गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास या एयरलाइंस के संबंध में हमारे यहाँ से प्रयास होता है कि हर चेक पॉइंट पे वो सब पैसेंजर को किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, किस तरह से उनको रिलैक्स्ड मोड में एयर ट्रैवल तक चलाए, ये सब हमारा प्रयास रहता है और काफ़ी हद तक ट्रेनिंग भी उसी संबंध में चलती है। और आपका जो जिस तरह से आपने सुझाव भी दिया है, डेफिनेटली हम उसी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा ऑलरेडी एक प्रयास इसी संबंध में रहता है। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा हुआ हो और कार्रवाई भी करते हैं, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सिचुएशन एग्रीवेटेड है किसी के बिहेवियर की वजह से या बात करने के तरीके के वजह से, तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि हमारे इस संबंध में पैसेंजर्स को सही तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सारे चेक पॉइंट्स पे होना चाहिए, सिर्फ एयरलाइंस की तरफ से ही नहीं, जितने भी चेक पॉइंट्स ओरिजिनेट होते हैं उन सब का होना चाहिए। और दूसरा विषय जो एयर फेयर्स के बारे में उठाया गया था, और ये भी मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली इसको ले रही है, जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे DGCA में है उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज़्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम ज़रूर उस पर ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमने इस तरह के हमने बनाए। क्वेश्चन नंबर 153 श्री कपिल सिब्बल जी। थर्ड सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल मिनिस्टर। का उत्तर पटल पे लग दिया गया है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री सतपाल शर्मा जी। John Britas, please take your seat. John Britas, please take your seat. Please take your seat. No cross talking, please. No cross talking. No cross talking, please. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में इस सवाल के बारे में एक जानकारी चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ मेजर reservoirs in whole of the country is 161, while in north zone there are only 15 major reservoirs. मैं मंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हाउ यू डिफाइन मेजर reservoirs, वन थिंग, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र, यहाँ पर भी फसलों को लेकर पानी की शॉर्टेज रहती है, किल्लत रहती है, तो वो जो मेजर reservoirs हैं उनको डेफिनेशंस को लेकर और वो छोटे क्षेत्रों में वो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। और PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी छोटे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ ना के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो AIBP के माध्यम से और CAWDM के माध्यम से हुई है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य दें।
महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सांसद जी को कहना चाहते हैं कि जो स्पेसिफाइड डैम्स है या मेजर डैम्स है उसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि जो 15 मीटर से टॉल है, ज़्यादा बड़ा है, या 10 से 15 मीटर हाइट है, विथ ए स्पेसिफिक चैलेंजिंग फीचर जैसे लॉन्ग क्रेस्ट है, लार्ज रिजर्वायर्स है, डिफिकल्ट फाउंडेशन है, हाई फ्लड डिस्चार्ज है, तो ऐसे डैम्स को हम स्पेसिफाइड डैम या मेजर डैम्स कहते हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केसवाई के बारे में जो आपने जो प्रश्न उठा, वो जवाब बाकी अधूरा है। हाँ भाई, नहीं मैं कर रहा हूँ, उनको भी कोशिश कर रहे हैं तो। श्रीमान इराना कडाडे जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। महोदय, कर्नाटक में वर्तमान में 200 से अधिक बड़े बांध हैं। एक मुख्य समस्या इन सभी बांधों में तलछट जमा होने की है, जिससे सभी बांधों की भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। मेरा प्रश्न है कि सरकार ने नदियों, जल निकायों और बांधों की तलछट साफ करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई योजना बनाई है क्या, और कर्नाटक में कितनी नदियों और बांधों की तलछट साफ करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है क्या? माननीय मिनिस्टर CR पाटिल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने प्रश्न उठाया है गाद के बारे में, वो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। करीब 15 से 20% गाद की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है और ये गाद निकालना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए मंत्रालय की ओर से 2022 में एक नीति बनी है और नीति के जरिए वो गाद निकालना और राज्य सरकार के उसको सपोर्ट करते हुए, उनको टेक्निकल सहायता करते हुए ये योजना को अमल किया जा रहा है। और बहुत से जगह पर राज्य सरकार उसको टेंडरिंग कर भी अपनी गाद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गाद निकालने के समय गाद निकालने के बजाय गाद कम हो, उसके लिए भी जो साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये दोनों को साथ में मिलाकर गाद की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक कर्नाटक में जो उन्होंने मांगा है डिटेल, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। The third supplementary, श्री दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, सामान्य तौर पर जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेंट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा जाता है और DPR मंजूर होने के बाद ही फिर फाइनेंशियल सैंक्शन दिए जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा अनेक प्रकरण मेरे पास हैं जहां मध्य प्रदेश सरकार ने बिना सेंट्रल वाटर कमीशन के मंजूरी के मेजर प्रोजेक्ट्स में भी मंजूरी दे दी गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल वाटर कमीशन की मंजूरी, DPR की मंजूरी बाध्य है कि नहीं है? इज इट मैंडेटरी और नॉट? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। CWC की मंजूरी बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना कोई भी स्टेट अपना काम नहीं कर सकता। वो अपने पैसे से काम कर सकता है, फिर भी वो DPR बनाकर CWC से सैंक्शन करवाने के बाद ही वो काम कर सकता है। तो ये जो अगर ऐसे कोई किस्से उनके ध्यान में होंगे, हमें बताए जाएंगे तो हम जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 154, श्रीमान सामिक भट्टाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 154, श्रीमान सामिक पटेल। Sir, a statement is laid on the table of the House, sir. Now, first supplementary, Shri Samik Bhattacharya ji. Thank you, sir. My question is related Ashoknagar oil field in West Bengal, where Government of India has already invested more than 1,000 crore. So through you,
I want to know from our Honorable Minister, can our Minister confirm whether the recent issue raised by the Government of West Bengal on stamp duty composition, despite a clear provision under the Petroleum and Natural Gas Rules 2025, is further delaying production and compromisation India's energy security? Sir, I would like to thank the honourable member not only for this specific question, which I am happy to answer, but also for his persistence in this issue. Sir, projects related to exploration and production, or E&P, are by very definition complex. They have a long gestation period, and, sir, they involve heavy capital expenditure. Insofar as the Ashoknagar project is concerned, sir, as this House, some of us at least, have been very familiar with this, the production sharing contract was signed for exploration block WB ONN 2005-4 between ONGC and oil during the NELP round 7. This was done, sir, in 2008, and ONGC was the contractor for this block. This block is located in the North 24 Parganas district, and the discovery was made, sir, in 2018. As the honourable member has said, sir, it is true that ONGC has spent 1,000 crores already on it. It is our estimate, sir, that the Bengal Basin contains a total of 240 million barrels of oil equivalent in place, proven reserves. If you go by this figure, at 30% recovery, the cumulative production value can be around 45,000 crores, out of which the state of Bengal would get 4,500 crores. So the limited point I'm seeking to make here is that initially a lot of time is taken, long gestation, heavy capital expenditure, but once you begin to see the oil and gas being extracted, it's pure joy after that, because that expenditure is recovered. Now, the operator applied for a petroleum mining lease to the government of West Bengal in 2020. The provisional PML, petroleum mining lease, was received from the West Bengal government in February this year, February 2025. Sir, I've had the opportunity in June this year of convening an Urja Mantra, a meeting of all the states along with all the other stakeholders, and I'm very happy to say that there is a new enthusiasm, new spirit of cooperation, and everything is moving per head. I can understand the honourable member's anxiety. Are we going to get delayed further? Sir, the exchange of letters between ONGC and the West Bengal government has only taken place on December 10 and 12. I have copies of the letter with me. My reading, based on where we've reached so far, that in the light of the latest legislation which we have, the oil field development thing, which has come out after that date, I think it was notified only about 5-6 days ago, I don't see any problem. The situation is quite clear that stamp duty has to be paid on the duration of the entire lease. So if the lease in this case is 30 years, the stamp duty will be paid on the entire lease period. The issue is on royalty. Stamp duty will be paid on royalty as and when the royalty is received. I mean, the whole idea is to facilitate this both for the concerned state government and the operator. And I think the honourable member who's been pursuing this will also realize that there has been all-round movement on this. Personally, I'm not a soothsayer and I don't like to anticipate, but I think considering when we started, 50 years it's been going on. 2008, we had the production sharing agreement. 2018, we moved forward on the PML. Now we have everything in place, maybe another few weeks, and hopefully we can say that this is something that we have achieved and that production will go on. Sir, I'm very happy to tell you that states, when they cooperate with the exploration and production activity, they get revenue, sir. Sir, they get revenues from petroleum and diesel. I can just share with you the state of Andhra Pradesh is getting 16,000 crores, Gujarat 24,500 crores, Maharashtra 37,000 crores, Rajasthan 18,900 crores, Tamil Nadu 24,861 crores,
Uttar Pradesh 31,200 crores, West Bengal 13,000. I'm sure once this is fructified and we have other discoveries, 1,000 crores has been invested and an area of 99 square kilometers are there. This is only one small area. When this began, I'm sure West Bengal's revenues will also go up as a result of this. So I'm reasonably confident, as I said, that based on the latest law, this business about stamp duty on lease rent and stamp duty on the royalty, which will be payable as and when the extraction takes place, and the royalty as a fixed amount accrues to the state government, this will be resolved. Thank you, sir. Second supplementary, Sriman Samik Bhattacharya ji. Sir, in view of the repeated delays by the state government, what remedial or security measures is the union government considering to ensure that the states do not hold national strategic energy projects hostage to procedural or revenue-related disputes? Honorable Minister. Sir, I think in a... My dear Minister is giving you the reply. Sir, I think, sir, in a normal seminar kind of discussion, this is a very valid question. But the thrust of my reply is that I think we've already reached the point where this deal is going to be finalized based on the exchange of letters on 10th and 12th December. However, I think the honorable member deserves to be commended for asking a question which is overall. If states do not cooperate, do they or do they not undermine the country's national, economic and energy security? That is a general point. Let me just say that I am particularly worried because I see a situation where we are producing, let's say, a total of 250,000 barrels a day from the KG basin, another 100,000 from Rajasthan. These are rough figures in my mind. 100,000 barrels from Assam, maybe 1.5, 2 lakh barrels from Gujarat. These are approximate figures. It is precisely for that reason that I convened an Urja Manthan with partnerships of the states, where these discussions have taken place, and as a result of which a large number of states have given clearances. I've already got 50 clearances after the Urja Manthan in June of 2025. So I think if states withhold clearances, my submission through you to the state, sir, is they are undermining their own economic well-being. I just read out how much states are earning from the revenue on petrol and diesel, and it will be very clear that the states which have been slow will now have to recover. Some states are doing well. But, sir, overall, we have an economy growing at 8.2% in the last quarter. Our energy consumption, according to the Indian International Energy Association, is that in the next 20 years, we will be consuming more than 30% of the incremental demand. So the energy consumption is rising. So our imports are also rising, even though domestic production is going up. But today we are consuming, sir, 5.6 million barrels of crude a day. Our refining capacity is going up. I would like to have our state governments, in partnership with the central government, to get more and more of this revenue. And I think what the honorable member has asked is valid, but let the message go through this House that the states actually serve their own economic well-being and the welfare of their citizens when they grant these licenses expeditiously. I am also confident, sir, that with ENP going up, we have the next 10th round of bids going to come up very shortly. Overall, with the new law in place, all the stakeholders will benefit from the far-reaching changes that the government under the Honorable Prime Minister has made in the last few years. The third supplementary, Dr. Fauziya Khanji. Sir, since the Lok Sabha reply dated 13th May 25 confirms that ONGC received the petroleum mining lease for the Ashok Nagar field on 24th February, and the minister also has just said that, and the FDP projections reported publicly indicate first oil within 10 months and gas within 17 months. So these timelines, sir, seem to be slipping. May I ask whether the mining ministry has assessed how this delay will affect the earlier realization of the
17,922 m³ of oil envisaged under the FDP along with the associated revenue and local development benefits, and whether the ONGC has been directed, sir, to issue a revised time-bound production schedule. Honourable Minister. I want to thank the honourable member for referring to those timelines. And as she herself would have noted, that was a provisional petroleum mining lease. And, sir, the ministry concerned is not the mining ministry. Earlier, in 1948, we had a law which governed both mining, that is extraction of ores, and petroleum mining. But this latest act that we brought, sir, this separates the two. Now a petroleum mining lease has to be negotiated by the concerned state government or other entities with the central government. And the timeline starts only when the lease deed is signed. So when the honourable member refers to, say, 10 months or 15 months, that is a timeline from the date it starts. Because we are reasonably certain that the oil and gas are waiting to be extracted, but unless it is granted and signed, and I think the latest step in that direction, sir, I want to remind the honourable member that there has been an exchange of letters on 10th and 12th of December, just barely 3-4 days ago, and where the state government had referred to wanting, I think, stamp duty both on the lease period and the royalty. When we pointed out that latest law clearly stipulates, without any degree of ambiguity, that the lease stamp duty, which is a very small amount, will be paid for the entire duration, but the stamp duty on the revenue earned from the the oil which is extracted as a percentage, that I mentioned how much we have estimated, that will be paid as the extraction goes on. So I'm very clear that timelines haven't slipped. It's just that if the petroleum mining lease deed had been signed, say 2 months earlier, it would have started from there. But I'm reasonably confident that with these clarifications and the ongoing interaction between the ONGC and the state government of West Bengal, and I can tell you the same thing, sir, is happening with the other state government. The new law brings in a degree of clarity which leaves everyone clear and certain. It brings in predictability, and I think all these leases will now go forward. So, the fourth supplementary, Sriman Sanilal Gracia. माननीय सभापति जी, बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया आपने। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से कि रिफाइनरी का लगाना सुनिश्चित किया है और लगाने के अलावा समय भी निकल गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि यह रिफाइनरी आप समय सीमा निकलने के बाद भी अभी प्रारंभ नहीं हुई, कब तक प्रारंभ होगी? क्योंकि राजस्थान स्टेट का कि उसमें रेवेन्यू का अपना शेयर है, तो इसे मैं निवेदन करना चाहूँगा और जल्दी शुरू करने के लिए आप क्या अपनी तरफ से क्या स्टेप लेंगे कि जल्दी वह चालू हो? धन्यवाद। Sir, I have a feeling, sir, that the honourable member is as familiar with the details of the refinery he's referring to in Rajasthan, I think the Barmer refinery, as I am. But since he's asked the question, it gives me an opportunity to explain. Sir, this is a long pending project. It is a project which started well before the government headed by the Prime Minister took over in 2014. But it is a matter of great satisfaction that this very large refinery, I don't offhand remember the capacity, but it's one of the biggest refineries that India is going to have. And it's an integrated refinery which will have not only petroleum and diesel being refined, but it will also have an integrated petchem project. So we are now again at the point, today we are at 10th December, so the discussion going on with the state government is whether we'll be ready to cut the first crude has been brought, and whether we are ready to cut it in, say, 30 days' time, or a little less or a little more. So the good news is, and it needs to be shared here, most of the work has been completed.
But, sir, I am one of those who believes in not coming forward till it's all ready. It's a refinery of which testing has already been done. It has, as I said, 9 million metric tons per annum capacity. And I believe, sir, that the crude has arrived there. Whether we do the cut, we need to test all the systems. Systems are functioning. And it's only a matter of a few days. Then I will accompany my colleague, the honorable member, who has been with me there many times. But since he chose to ask this in the context of the Ashoknagar question, I am very happy to oblige him. Thank you, sir. Fifth supplementary, Shriman Mohammad Nadimul Haq ji. So thank you very much. So despite the tone of the previous questions to the contrary, sir, the West Bengal government has requested the ONGC to provide specific details of the land areas to be explored in Ashoknagar, sir. And sir, I am happy to say, and as confirmed by the minister, that the ONGC gave the details in 2024, and the government immediately gave the license. So I just want to confirm with him that the government of West Bengal is fully cooperating with the ONGC in this matter, sir. And initially, the land area for exploration was 5.88 kilometers, which was expanded to 90 square kilometers. Speak about your question. Sir, that is my question, sir. That don't give big lecture, please. Minister, come to the point. Let the minister please confirm that there is full cooperation in this regard with the government of West Bengal. Sir, I said initially, sir, I'm happy to repeat it. It is something which has been going on since 2008. It started with 5 square kilometers. Now we're at 99 square kilometers. Specific details were sought. They have been provided. And in the light of the latest correspondence, which is just a week old, I'm reasonably confident we can get started on this, and then revenues will come in. On election reforms raised by Sri Ajay Makanji on the 11th December 2025, I now call upon Dr. M. Tambidurai to resume his speech. Time remaining 7 minutes. Honorable Chairman, sir, I continue to speak on the election reform, which I yesterday, day before yesterday, spoke on this house. Especially the election, the ADMK party is a faith on the election commission. What are the actions they are taking, we are in the faith, sir. First of all, the election, ADMK believes clean and accurate electoral rolls strengthen democracy. Transparency empowers voters. And also, the election campaign is one of the important, the election process, in that political parties must be given the proper chance to campaign that area. Especially in Tamil Nadu, sir, I am to raise certain points here. Sir, election commission is very vital part of the healthy democratic system. It is the part of the election system, sir. After Karur incident, Supreme Court directed Tamil Nadu government to formulate the SOP, Standard Operative Procedure, to conduct the public meetings by the political parties. Please, either you take your seat. In this connection, High Court Madras issue or please go to the lobby. SOP. Government also conducted a all-party meeting to hear the opinion at the parties. So far, no, sir. Formulated by Tamil Nadu government is not, SOP is not fully taken. So political parties facing hardship in Tamil Nadu to conduct public meetings to express our views to the public for the campaign, sir. And also, sir, you are now my leader, Kadapadi Palaniswamy, wanted to address the gathering in Hero district. He could sorry, election campaign is one of the election campaign is one of the department. Please stick to electoral reforms. So, don't raise the issues of the state. Please come to the electoral reform. Sorry, election commission process, how the elections are taking place, that is what I am raising. In Tamil Nadu, for electoral reforms, when they are taking place, for especially to campaign is one of the important election process. What we are facing, my leader
could not get the proper chance and a proper place. And I am telling this is a fact. But sir, but the Tamil Nadu government, Tamil Nadu Chief Minister yesterday, he had a big rally in Tirunnamalai. Whether you followed the condition SOP, whichever is whether we followed, but why are putting the condition for us? And also this, sir, this is very, very impartial, and this is not baseless, sir. And also regarding the electoral accurate electoral sensor, when I spoke this regarding this system, the Elango farmer, sir, is not here. The member of the DMK said, I am this election home ministry, law minister is supporting ADMK party. Sir, how can they support? This is that's the allegation they made. This is on the record. Therefore, I am once again saying, sir, I also serve as a law minister in Vajpayee government. The election commission under me. Once again, say, you never interfere in that. But now, sir, when the election is a revision, the poll is taking aside is different issue. But every year, electoral rolls are reform. That is going on, taking place. In that side today, sir, one ex-MP of this Lok Sabha, DMK member, said, made the paper has come, 85 lakh voters going to be removed in Tamil Nadu. This accusation. Who is responsible for that? Tamil Nadu government is conducting all these things. How can you say, give the minister representation, then election 85 voters are going to remove? This is the job of the election Sir, my time is my time. Yeah, your time. You please stick on to, don't make false allegations. No, not false allegation. I am giving the, if you want the authentication, I give the authentication. I will authenticate. Yes, I will authenticate that. Please, you all by I will authenticate. You please by I will authenticate. When you are interviewing, then like this, there cannot be arguments and counter arguments. Please, you all take your seat. No. Then you sir, please take your seat. Please you take. Sir. Tiruchi Shivaji, you please take your seat. Madam, you please take your seat, please. Sir, I told you, the election campaign is one of the electoral reforms. First, during the, sir, you know very well, first, during the Erode by-election, opposition parties complained that voters are allegedly held in a temporary sheds, denied the freedom movement, and prevented from meeting opposition candidates. Such action is to amount to the influence state who have done. Sir, the former minister at ADMK. Honorable Chairman has already requested you to confine yourself within the boundaries of discussion. I want to come to the point, sir. Please. See, Election Commission is allowing campaigning for the political parties. But what the DMK party is doing, they are all denying the chance for us. For example, I'm told you what happened in Erode by-election also. Please, it's not... I'm telling. See, instead of... We are discussing... I am as a candidate, I have every right to go and campaign and meet the voters. But the DMK government is not allowing that. They are taking all the voters and kept in a camp. And they are not allowing. This is the accusation. Already we raised the issue to Election Commission. Reforms, please. Therefore, I am requesting the electoral reforms, when they are discussing that, this kind of aspects is taken. Election, that is voters, revision, everything is a process, regular process. I am not coming SIR. Every year, the Election Commission is conducting, this is a part of thing. But the ruling party accusing 85 lakhs voters are going away means, till now how they can say, now why they are giving a misnomer to the public to see that they are going to lose the government election, coming election. For that, they are telling these 85 lakhs voters are going away means, then this is already the planned, excusing their defeat they accepted. Please confine yourself to the subject. That is the thing, what is going to happen. But the only DMK that will go on unnecessarily record. giving wrong information to the public that the election, you are accusing Election Commission. This election, accusing election, is in the, we cannot do that in the things.
Please, that is why I'm telling. That is why yesterday, sir, last time when I spoke, he said, at that time, what the member said, ADMK party is benefiting the home ministries and law ministry. He said, is the fact. You have to deny. Whether you're going to allow it in on the record. Therefore, I am denying that. Therefore, I am telling Tamil Nadu is a fair place where the election must take place. The ruling party, DMK, must not misuse the power and spoil the game. That is, they know they are going to lose the election. That is why they are creating this problem. Therefore, Honorable H.D. Devagola. No. Sri Eram Venkat Subba Reddy. Yes. Mr. Reddy, he has a point of order. Honorable Trichu Sivaji. Rule. I don't deny he has got the right to speak anything, sir. He quoted, he was reading out a newspaper and it was about a former member of parliament. He is not a member of this house. And he cannot come and give an explanation. So anything mentioned about that, kindly. I have already reminded him, please will take. Kindly go through that and explain, sir. Yes. Honorable Sri Eram Venkat Subba Reddy. Sir, thank you very much, sir. I thank you for this opportunity, sir. Sir, electoral reform does not mean that you bring some changes after Lok Sabha elections and conclude that you have done electoral reform, sir. And we have to bring reforms in the state level and also at national level, sir. And only such electoral reforms will protect, preserve democracy and the democratic process in the country, sir. Sir, we all know that electoral reforms is a continuous process. You have to learn the election commission has to learn from its discrepancies and mistakes, sir. Mistakes committed during assembly elections, sir, be it in Andhra Pradesh or anywhere else, sir. Mistakes committed at the general elections or even mistakes committed during panchayat and local body elections also, sir. Sir, I am representing Andhra Pradesh state in this house, so whatever examples I give only relating to my state happened during 2024 general elections, sir. I am not casting any aspirations to anybody or any party, sir. But I'm only quoting the facts and suggesting that what is to be done by the Election Commission to maintain its integrity and transparency and address shortcomings, sir. So I will be brief and pointed in some of my submissions, sir. Sir, first I will come to Form 20, sir. It contains exactly poll vote dates excluding postal ballot. Election Commission issued a press note on 25th May 2014, indicating the absolute number of voters participated in the first phase of 2024 general elections, sir, which also includes fourth phase elections held in Andhra Pradesh. This exact number of votes polled has been shared with the polling agent through Form 17C. This press note is said to be absolute and final, sir. But there is huge discrepancy in the final votes counted and exactly polled votes declared by Election Commission of India through Form 20, sir. Discrepancy happened in 25 constituencies. That means all 25 parliamentary constituencies in Andhra Pradesh, sir. Sir, I suggest for consideration of the Election Commission through you, sir, to look into why this discrepancy has happened. Who is responsible for this and what action it has taken against the erring officials, sir. Sir, my second point is I wish to make it relating to Form 17A, sir. It deals with the voter register. Sir, simultaneous elections, Lok Sabha and Assembly were held in some states, including Andhra Pradesh is one of them, sir. We have common voter list. We have some polling stations and polling is simultaneous, sir. In such a scenario, register of votes in Form 17A, the accounts of the votes recorded in Form 17C and votes entered in EVM should be same for both Lok Sabha and Assembly elections, sir. And in any discrepancy has to be recorded in Form 17A under Rule number 490, sir. So if there is any mismatch between Lok Sabha and Assembly votes, it raises procedural and legal concerns, sir. But such lapses observed in 2024 general elections in Andhra Pradesh, sir. This indicates that votes data was altered or manipulated or deviation in the electoral procedures, sir. There are many examples, many constituencies, Raptadu, Dharmavaram, Rayadurgam, Kadipatri, Alagadda, Kadapa, Pulivendala, etc. Like this, so many constituencies were a lot of discriminations were there, sir. So I appeal to the Election Commission to conduct an inquiry so as to why it has happened and ensure that such things do not occur in future, sir. Sir, I want the YSR Congress Party wants
and the people of Andhra Pradesh want is that there should be fairness in conduct of elections, clarity in outcomes and transparency in public disclosure, sir. So I appeal to Honorable Prime Minister and government, and through you, sir, the Election Commission should, these are my suggestions, my party suggestions, sir. Mandatory public release of CCTV footage from Form 17, from 17C, 17A and 17C, and presiding officers' diaries, sir. Number 2, statutory enforcement of Supreme Court mandated EVMs verification, sir. The most important them all is to replace EVMs, sir, with paper ballot is all future elections, sir, because electoral system that can't be audited cannot command trust, sir. EVMs may be efficient, but can't be trusted, sir. Paper ballot may not be efficient, but can be trusted, sir. You need trust in democracy. Live streaming of 100% webcasting at all polling stations, sir. Sir, with these submissions, I conclude by just saying that we have the YSR Congress Party has brought this to the notice of Election Commission, not once, twice, sir, multiple times. YSR Congress Party has got 40% vote share in last general elections held in 2024, sir. And the mismatch that we have mentioned above is questioned by political analysts and experts, sir. Last minute, sir. We are only highlighting these things to bring reforms in the electoral process to make our elections free, fair, and transparent, sir. Election Commission, as an independent body which is responsible for conducting elections in the country, should uphold the principles on transparency and accountability, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Reddy. Mani Sanjay Yadav ji. थैंक यू सभापति महोदय। चुनाव सुधारों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर देने के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी और आपका धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जैसा कि इस चर्चा में सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये वाक़ई हम सब भी गर्व से दोहराते हैं, लेकिन एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की पहचान केवल मतदाताओं की संख्या से तय नहीं होती, यह उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी से तय होती है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने से ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ईमानदार लोकतंत्र होना। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त ज़रूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार SIR हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नज़रों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमज़ोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ बिना SIR के 48 लाख वोट जोड़े गए और एब्सोल्यूट वोटिंग में 12.2% का इंक्रीमेंट हुआ। बिहार में SIR हुआ, कुल 7,89,00,000 वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद SIR की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए, तो कुल 7,45,00,000 वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले SIR से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और SIR के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा
ये बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी। अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6, तो ये वोट घट रहे हैं एसआईआर में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहाँ 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहाँ 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी, वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। उस 35 दिन में, जैसा कि सब जानते हैं, बिहार का 73% जो भूभाग है वो बाढ़ प्रभावित है। सावन का भी महीना था, लोग कावड़ लाने जाते हैं, धान रोपाई का भी समय था। माननीय संजय जी, ये एसआईआर ये सब जुडिस मामला है और माननीय चेयरमैन ने शुरू से ही रिक्वेस्ट किया था महोदय, चूंकि हम चुनाव सुधारों पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अनुभव था तो उसी के संबंध में, वो भी एक चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। महोदय, बिहार में 1,77,526 वोट पोस्टल बैलेट थे। उस 1,77,526 में हमारा गठबंधन 143 सीटों पर लीड कर रहा था। हमारा विपक्षी गठबंधन एनडीए मात्र 94 सीटों पर लीड कर रहा था। अदर्स के हिस्से में 6 सीटें थी। पोस्टल बैलेट में मतदान में हम 44.6% मत प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हुए। जो बाकी जो प्रक्रिया रही उसमें क्या विसंगतियां रही, उस पर मैं आऊँ। तो महोदय, केवल हम जब चुनावी सुधारों की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म सही तरीके से हो, पक्ष विपक्ष दोनों संतुष्ट हो, और सबसे बड़ी बात है जनता संतुष्ट हो। चुनाव सुधारों पे ये चर्चा केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। आज मतदाता को लग रहा है कि उसके वोट के साथ कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो पिछले दरवाजे से उनके मतदान के साथ कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ना कि कोई विशेष पार्टी। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जनता की हर दुविधा, हर शंका, हर सवाल का निवारण करे और तुरंत करे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें सही समय पे सही उत्तर नहीं मिल पाता। किसी ने कहा है कि किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर एम्पायर ही टीम का खिलाड़ी बन जाए तो खेल नहीं होता, साजिश होती है। चुनाव प्रक्रिया आज जनता के सवालों के कठघरे में है। हमें सोचना होगा कि आज़ादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जब आयोग सवालों से भागता है और साफ साफ जवाब देने में आनाकानी करता है तो शक अपने आप जन्म लेता है। देश की जिस संस्था पर सबसे कम सवाल उठने चाहिए, आज उसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अति खतरनाक है, हानिकारक है। आज चुनाव आयोग किसी सरकार का और पार्टी का पर्सनल एक्सटेंशन काउंटर नहीं बनना चाहिए। ये हम नहीं, जनता, सर ये हम नहीं, जनता कह रही है। ध्यान रखें, जब चुनाव आयोग का हर फैसला वही चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी, सत्ता के टाइम टेबल और उनके प्लान से मेल खाए तो सवाल और शक उठना स्वाभाविक है। महोदय, हम
इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करिए सर, उसी पे करें। हमें सर चुनाव सुधार चाहिए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का सफाया नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टिव इनकरेक्ट रिवीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट इंटेंसिव रिवीजन चाहिए। ऐसा लगता है कि ये SIR नहीं, SPR स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है सर। सब जुडिस मामले पर न बोले आप। SIR के SIR के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए और जो ठीक हो उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है तो डर किस बात का। लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल नहीं रहेगा, निष्पक्ष खेल नहीं होगा। सर मैंने स्वयं चुनाव आयोग को एक 4 पेज का लेटर लिखा कि कैसे कैसे धांधली हो रही है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सर क्यों ऐसा विश्वास बढ़ रहा है, जनता क्यों सवाल उठा रही है? क्योंकि और मैं विगत कई चुनावों की, जो 6 चुनाव राज्यों के चुनाव का मैंने जिक्र किया, हम उसमें जनता इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सवाल उठा रही है। हम सिर्फ उनकी आवाज़ को, उनकी भावनाओं को, उनकी शंकाओं को आपके माध्यम से यहाँ सदन में रख रहे हैं। दुनिया की हर मशीन ऑडिट होती है महोदय, लेकिन EVM पर ही ऐतराज क्यों? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी या चूक नहीं है, कोई भी। हमने देखा है हमारे देश में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे साइबर अटैक होता है, उसे हैक करने की कोशिश होती है और किया भी गया है 2018 में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी साइबर अटैक्स हुए हैं। तो कोई भी तकनीक अचूक नहीं है महोदय। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली प्रणालियां भी हैक हुई हैं, तो EVM को अवैध कहना तकनीकी रूप से सही नहीं लगता महोदय। EVM पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं, मजबूत करता है। अगर वोटर कहे कि मुझे EVM पर भरोसा नहीं है तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? अगर वोटर कहेगा कि मेरे पास सब कागजात हैं और आप मेरा वोट डिलीट कर रहे हैं तो उसे क्या आप अपराध मानेंगे? नहीं महोदय। EVM को बचाने से ज्यादा जरूरी है जनता के भरोसे को लोकतंत्र में बचाना, और जनता का भरोसा किसी मशीन में नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रणाली से ही संभव है। जब वोट कागज पे दिखता है तो गिनती में कागज क्यों नहीं? हम 5% मिलान भरोसा नहीं देता, 100% मिलान ही भरोसा देगा। लोग कह रहे हैं कि EVM पारदर्शिता नहीं दे रही, और लोकतंत्र पारदर्शिता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम चुप रहेंगे तो सर मशीन जीत जाएगी, और हम बोलेंगे तो लोकतंत्र जीतेगा। अगर कहीं कोई शक है तो हम सबको बिल्कुल बोलना चाहिए, निडर होकर बोलना चाहिए। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो तो लोकतंत्र की आवाज साफ कैसे सुनाई देगी? महोदय, मशीन जीत जाए और हमारा मतदाता यानी मानव हार जाए तो ये लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए खतरनाक है। महोदय, मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव नहीं बनाया। मतदाता मशीन से बड़ा होता है, और बिना मतदाता लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जनता को इलेक्शन चाहिए महोदय, सिलेक्शन नहीं चाहिए। महोदय, कई कामयाब और लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान करने वाले विकसित देश पारदर्शिता के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अस्वीकार किया है, और चुनाव सुधारों के लिए महोदय निष्पक्षता दिखानी पड़ती है, सिर्फ कहना ही काफी नहीं होता। रेफरी अगर नियम पूछने पर नाराज हो जाए तो मैच के नतीजों पर सवाल उठाना लाजमी है। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र अब बैलेट पेपर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सत्यापन योग्य है और भरोसेमंद होता है और जनता को दिखता भी है। महोदय, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनावी सुधार में कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव सुधार यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है जो नागरिकों को विश्वास दिलाती है कि सत्ता उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है, न कि धन, शक्ति और प्रभाव का परिणाम। भारत को चुनावी सुधारों की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। ऐसे सुधार जो चुनाव आयोग को और मजबूत करे, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाए, धन बल की अंधेरी सुरंगों को रोशन करे और मतदाता के विश्वास को पुनः केंद्र में स्थापित करे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है, और चुनाव सुधार वही रास्ता है जो इस विश्वास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय ऑनरेबल श्री HD देवेगौड़ा जी।
Respected Deputy Chairman, sir, I would like to express my sincere thanks to you for having given me an opportunity to speak on the issue that is the allegation made by our recognized opposition about the voter list. Sir, I am a Congress worker, 1952, 1957. When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, 52, 57, 62 and 64, what happened? I don't want to repeat that. After the demise of Pandit Jawaharlal Nehru, the tallest leader, Lal Bahadur Shastri came to power. He was there for a short period. You know what happened? The Tashkent Agreement. Sir, after that, Madam Gandhi became the Prime Minister. During her period, I think more than 380 or more than 316, 3-4 elections, Madam Gandhi was able to score in the election. When once there is a decline, then she thought of bifurcating the Parliament and the Assembly separately to fight the election. Even that, I fought the election when it was separated. I have never raised any objection. I was in the opposition. Earlier Samstha Congress, then Janata Dal. I am the president of the Janata Dal when Janata Dal was formed during Morarji Desai. Sir, I never raised any objection. About the bifurcation of the Parliament and the Assembly separately, even then we bow our head and we fought the election. Sir, I was defeated once in the Assembly. 7 times I won the Assembly. 4 times I won Parliament. And 3 times I was defeated by Congress. I never blamed the Congress has made me to defeat by manipulating the voter list. I never. Please take your seat. Please. Surjewala ji, nothing is going on record. Let him speak. I am not. Please, Surjewala ji, please take your seat.
I have not made any. Honorable sir, please speak. Because Please speak. Only that will go on record. Honorable H.D. Devgowda ji, please speak. There is no other party. In Karnataka, Samstha Congress, Indira Congress. Janata Party, Congress. Please, if you know the history, from last 1952, then you would not have raised any objection. Please pardon me. I have not come to the language you have used, vote chori. I have not come. Manipulation of the voter list. That's all I have said. Sir, in 1991, I came to Lok Sabha. The lone member from Janata Dal. In 1994, I went back to Karnataka and I became the Chief Minister. I have not completed 2 years. I don't know what the sin I have committed in the past life. I am a believer in that. Congress lost the election. And Congress Working Committee, if my memory is correct, 12th May 1996, they have passed a resolution. We are going to support a non-BJP government if secular parties are going to come together. Then the 13-party coalition, the left parties in those days was very strong. And DMK, Mubnar Congress, was totally got 40 seats. TDP has got 40 seats. Biju Janata Dal and our part, I got 16 seats as Chief Minister. And the Congress extended their support through a resolution to support the non-Congress government, non-BJP government. We all sat together and we took a decision to make Jyoti Babu as the Prime Minister. 2 days the discussion went on. Ultimately, their party, there was difference of opinion, and Jyoti Babu declared my name as the Prime Minister. I was in tears. People have given the mandate in Karnataka to rule Karnataka. I have not got the mandate to rule this great nation. But the circumstance was forced. 13-party coalition, I was forced to head the 13-party coalition as Prime Minister. I took oath on 1st June 1996. I was there for hardly 10 months, 20 days. Why I am narrating all these things? The manipulation of the votes, voter list.
प्लीज शक्ति सिंह गोयल जी सीट पर बैठ कर ना बोले। I have never raised. I have never raised. Please, sir, conclude. Your time is. Sir, please. Please. There is a letter written by Pandit Jawaharlal Nehru. The letter is about inclusion of 18,000 votes in Kerala when Namrudipad was the chief minister. The letter is here. He asked Govinda Vallabha Pant, then Home Minister, to verify the letter is here. Electoral reforms and not on the electoral history. Please, sir. Please conclude. Please. Randeep Surjewala ji, please. I request please our honorable colleagues. Sir, please conclude. Your time is over. I may be aged. My memory is alert. Sir, please conclude. I will never irresponsibly. Please conclude, sir. Conclude. Sir, conclude. This is a letter written to Govinda Vallabha Pant. 18,000 votes during Namrudipad's period in Kerala as included. See that it is verified. Sir, your time is over. Please conclude. Why I am telling this? Please. During Nehru's period also, there are certain lapses in the electoral system. That is what I am telling. Let's have a discussion on all the sins committed. No, this is not today. Please take your seat. Let him speak. Please, sir. Please, sir. Please conclude, sir. He is also written a letter. Please. Randeep Singh Surjewala, you have no permission to speak. Please, it's not going on record. Please conclude, sir. Please conclude. They are little bit worried. What I am narrating. Sir, your time is over. Please conclude. I have requested the leader of the House and the Parliamentary Affairs Minister in presence of the Vice President and the Chairman of this country to give more time, to spare some time from their party. Whether the party has given time to Honorable That is what I have requested. Sir, former I hope and trust they will cooperate with our me. parties. Please. Sir, now let me come to the point. Bihar election, how much they fought about the electoral mistakes that has been committed by the Election Commission. And ultimately, the Election Commission reviewed nearly 62,000 votes were deleted and about 12,000 votes added. Having done 65 lakhs, 65 lakhs. क्यों आप प्लीज आप आपको मौका आएगा आप बोलिएगा प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन आपको मौका मिलेगा आपको बोलना है आप बोलिए ये आपका जॉब नहीं है प्लीज आपको जब मौका मिलेगा बोलिए sir please do not disturb they are very much perturbed. What happened afterwards? Even after so much review, saturate the voter list, what is the end result? Think yourself. You also think, sir? He got 6 votes. 6 MP, 6 MLAs.
That is the position. Sir, in 2014, Narendra Modi ji came to first to national politics. 12 years he was in Gujarat. He was ruling the state as chief minister. When he comes to Delhi, in the first election, he got टिप्पणी ना करें, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं, please. He got 286 votes. Was there any manipulation? Nobody has raised any manipulation. I am in this house. In 2019, Please, up. Please hear me, brother. Sakti Singh ji, आप बैठे. Please hear me, brother. Please, sir, conclude your time, please. Have patience. Please. In 2014, I came to Parliament. 2022, I came to Parliament. Lok Sabha. 2020, You address to the chair. Honorable Deogala ji, you address to the chair. No, आपस में बात नहीं, please address to the chair. 2018, I won the election, Lok Sabha. 2020, I was defeated. 2022, I came to Lok Sabha. 2014, I came to Lok Sabha. Please hear me, sir. 2019, I came to this house. 2026, I came to this house. Sir, with this vast experience, no, why they are becoming so angry? Please conclude, sir. Please conclude. Why they want to make allegation against the Prime Minister on the issue of the voter list? The Election Commission is there, Supreme Court is there. The Election Commission has given direction to all the state units to rectify all these things. I have got sufficient documents. Sir, Modi ji, with his personality, when he won 286 seats, he could have formed the government. But he thought over to get back those allies, those political parties who supported Vajpayee, and he took them to form an NDA. Though he has got the majority. In 2010, again the elections were held under the leadership of Modi Sahab. He got 306 seats. He could have formed the government on its own. He took all the coalition so that to give an opportunity to all those friends who supported Vajpayee, continued the coalition and gave a stable government, a strong government to implement so many programs. Sir, in 2025 or 24, he got 248 or 250 seats. Again, all those people who were earlier, they've all come together. Yes, at the last leg of my life, about 2 years back, I gave my support to NDA. There is nothing to hide.
Why? Please conclude, sir. Please. Why the Congress people who try to destroy Devagowda or the Janata Dal, or the Janata Dal, nothing is going on record. or the Janata Dal, Please. Who has been in public life from last 7 decades, they want to destroy. My only Janata Dal is a regional party. Sir, I have never raised when I have been defeated by the so-called Congress leaders. Sir, I have never raised. Sir, any vote बीजेपी की तरफ से समय आपको मिला है for conclude. They have agreed in presence of the Vice President and the Chairman. Please, don't disturb me. Give me some more time. Sir, today in this country, if these friends wants to make a mockery about the Prime Minister in the streets and the public platform, they are making Prime Minister office to denigrate. Sir, we have never done it. In last 70 years in my public life, we have never done it. We have never used such a word, even when Indira Gandhi got 400 seats, when Rajiv Gandhi got 400 seats, when Indira Gandhi got 380 seats. I have defeated. Never. I have never. Please, the system, what has been now so strong, our constitutional forefathers, Dr. Ambedkar, under his chairmanship, has given a strong foundation for a democratic system. This cannot be eroded by anybody. They were talking in the public, RSS, Janata Party, Janata Dal, Bharatiya Janata Party, combined, they are going to destroy the democratic system and the democracy is in danger. This type of slogan, who bothers? Sir, If please the conclude. People have been, Sir, have got sir, please any conclude. responsibility. Please They conclude have now. Turned hostile against Narendra Modi's Please conclude, sir. government. Please conclude. People have never turned hostile. Please conclude, sir. It shows they have full confidence in Narendra Modi's government. Sir, I have given my full support to Narendra Modi's leadership. The country needs, this is a very big country, a large country. Congress may be in 3 states. Remember, my friends, please, by using the word vote chori, you are going to suffer in the coming days. You are not going to win the battle. I am telling you, I know what is the country politics. I can speak, sir, please. hours together. You are ringing the bell. There are so many Sir, things. there are number of speakers. My friend, DMK friend is here, who has supported me when I was the Prime Minister. Thank you, sir. What the stand they have taken, I know that, because to maintain their political strength in as DMK in Tamil Nadu, they are fighting. I know. I am not blaming. But only thing is, blaming Narendra Modi's leadership and creating a suspicion in the mind of the voters in this country, which is a large country, that it is what is called
vote chori, vote chori, vote chori. What has happened to their mind? Thank you, sir. Let them rectify their willful or a mind which has been corroborated. Don't do that. It is not going to help. Modi's government Please conclude, sir. And fight the battle under his leadership. 2028 will come back to power. This is thank you as an oldest person in Lok Sabha and Rajya Sabha. I am speaking. I could have spoken more. Pandit Jawaharlal Nehru letter is also here. If you want, I can place it on the table of the House. Yes, please place on. What he has written to Thank you. Numrudipal and West Bengal Chief Minister Mr. Roy. Thank you. The letter is here. If anybody wants, I can place it on the table. Yes, please place on the record. With these words, thank you, sir. Even though I want to speak a little more, sir, it's already not mine. The time which has been given to you. At least you have given that much of time. Thank you very much. Honorable K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, Vice Chairman, sir. Deputy Chairman, sir, my apologies. After the Vande Mataram debate, the House taking up the debate on electoral reforms is most welcome, sir, as it is reassuring to speak about the health of our democracy, a legacy that was handed to us not easily, but the one that was forged in the fire of sacrifice by our freedom fighters. It is the solemn promise of our Constitution that every citizen remains the true master of this republic. Talking about electoral reforms and the power of the ballot, I would take this honor to present before this House our own experiences from Telangana. The power of the ballot was clearly demonstrated to the nation by our leader, KCRG, when the struggle for Telangana began, sir. Our struggle for Telangana for the last 14 years, where an unprecedented kind of dharnas happened. The women, the farmers, students, employees, every person in the society of Telangana fought for it. But the only important thing which could awaken the government of India, which could bring a sense of responsibility, was the power of ballot. And to quote the power of the ballot, sir, my leader, KCRG, to demonstrate that the will of the people is so clearly visible, he resigned twice as a member of parliament. He resigned twice from different regions of Telangana, so that the country gets a sense that it is not one particular region or one particular area. He resigned when he was not in power. Our party was not ruling in Telangana, neither in center. But the courage of KCRG, the trust he had in the belief of the ballot was so visibly demonstrated, sir. It is not only he, seeing his resignation, the people of Telangana compelled other political parties to resign, as that would demonstrate the kind of will which is prevailing there of the people. So this being the power of the voter, my leader and my party, we are very keen that every eligible voter of this country, every eligible citizen of this country should be enrolled as a voter, sir. So speaking on this, of course, a debate has been continuing. We support that electoral reforms are definitely a backbone for a healthy democracy. But to ensure this, the voter list, which should be accurate, inclusive, and transparent. Large and diverse nation like us, Deputy Chairman, sir, need clean electoral rolls. That we totally agree. Having said that, we have to ensure that the registration, updating to facilitate voting access for migrants, disabled, senior citizens, urban poor, and people with limited documentation should be entitled for their voting rights, sir. Strict re-verification
should not become a mechanism for exclusion. Ensure that no eligible voter loses their right to vote simply because accessing paperwork is difficult. Today, the government's initiatives are every state government and government of India, the ease of doing business, the ease of communicating. We have seen people through Me Sevas in Telangana getting their certificates all electronically. In an age like this, why is it a challenge for a person whose name has been removed from the electoral roll to get back into the electoral roll when he is an entitled citizen of this country? That should be the concern, and that should be the mechanism to be adopted, sir. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नियम 377 जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने मामलों को अनुमतिदान पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पे रख दिए। आइटम नंबर 14A, माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the. I called his name, please. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the repealing and amending Bill 2025, which provides for repealing of certain enactments and to amend certain other enactments. Thank you, sir. Dr. T. Sumati ji, not present. Shri N.K. Premchandran ji. Sir, I am not objecting the bill. My point is that it is being circulated just now, the supplementary list of business. All these four bills, if you examine Rule 72(2), it is the right, legitimate demand of a member of the House to oppose the introduction of the bill. Unfortunately, when the bill is circulated yesterday in the night, that too in the late night and today morning, and when the bill is in such a way it is being circulated, it is a specific direction is there. Direction 19B is there. By virtue of 19B, the direction of the Honorable Speaker, it is mandatory that the bill has to be circulated
introduction of the bill. I do admit the fact that the Speaker has every right to abandon it or every right to exempt it. But the point is that the members are getting an opportunity by virtue of subclause 2 of Rule 72, that by which when the bill is being introduced, we will be getting an opportunity to oppose the introduction of the bill. Today afternoon, just half an hour before, supplementary list of businesses put in the website. So how the members are getting an opportunity to oppose the introduction of the bill without going into the contents of the bill, number one, and also the list is not being circulated, agenda is not being circulated. So my point is that in all these bills, it is not fair on the part of the government in bringing such type of bills and getting it introduced. It is bulldozing of the legislation and the members' rights are being taken away. Parliament cannot be taken for granted. Why the government can very well introduce the bill tomorrow? We are ready to oppose and we can very well state the reasons. Because the legislative competence. Yes, sir, I heard you. The legislative competence of the bill has to be challenged. If we want to challenge the legislative competence of the bill, we should have some homework. We should have to go to the bill, but unfortunately, we are not getting an opportunity to go through the contents of the bill. Yes, sir, I heard you. Just coming to the House and supporting it means it is quietly, it is bulldozing of the legislature that may not be allowed. Sir, 72-2 ये कहता है कि ये हाउस कॉम्पिटेंट है या नहीं है इस बिल को डिस्कशन करने के लिए या पास करने के लिए। ये जो बिल है सर, ये तो इस हाउस के द्वारा पास किया हुआ बिल है जिसको कि सरकार रिपील करना चाहती है। इसमें कौन सा 72(1) का वायलेशन हो रहा है? Please listen to me. Honorable Speaker, sir, has waived the requirements of Directive 19A and 19B on a request made by the Honorable Minister. प्रश्न ये है कि विधायक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहें वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Chairperson, sir, I introduce the bill. Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move for the leave to introduce a bill to enable and empower the universities and other higher education institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Vikasit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters of connected therewith or incidental thereto. Sir, you will be given an opportunity to speak. I will give an opportunity. Kindly be seated. There are listed members to be given opportunity. माननीय श्रीमती ज्योति मनी जी, Not present. माननीय श्रीमती के काव्या जी, माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Chairperson, I rise to oppose the introduction of the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. The grounds for the opposition of the bill are as follows. First, the bill results in excessive centralization of higher education and violates the constitutional distribution of legislative competence. While Parliament may legislate under entry 66 of List 1 on coordination and determination of standards, this power is limited and cannot be used to occupy the entire field of legislation. The bill goes far beyond standards and intrudes into administration, affiliation, establishment, and closure of university campuses, their institutional autonomy, matters falling within entry 25 of List 3 and entry 32 of List 2,
which covers incorporation and regulation of state universities. Second, the bill suffers from excessive delegation of legislative power. Vast and substantive matters ranging from accreditation frameworks, degree-granting powers, penalties, institutional autonomy, and even supersession are left to be determined by rules, regulations, and executive direction. This abdication of essential legislative functions violates settled constitutional principles governing delegated legislation. Third, the bill undermines the autonomy and independence of statutory regulatory bodies by making them bound by policy directions of the central government and subject to supersession at executive discretion. Such provisions erode institutional independence and offend the constitutional requirement of fairness, non-arbitrariness, and check on executive power under Article 14. Fourth, the bill also concerns Article 19(1)(g) of the Constitution of India by subjecting educational institutions to pervasive executive control, graded autonomy, intrusive compliance requirements, severe penalties and closure powers. It imposes disproportionate and unreasonable restrictions on the right to carry on education as an occupation. While regulation in the public interest is permissible under Article 19(6), the bill goes far beyond reasonable regulation and vests unguided overboard powers that fail the test of proportionality as laid down by this House and the Supreme Court. And last, Mr. Chairperson, sir, I oppose the bill given the overriding clause given by this bill over all other laws, coupled with the powers to supersede existing regulatory structures, raising serious concerns of arbitrariness, legal uncertainty, impacting institutions established under state laws without any safeguards. And I do hope, Mr. Chairperson, sir, that the Minister would reply to each and every ground on which the introduction of this bill has been opposed. Mananiya Shri N.K. Premchandran ji. Sir, thank you very much for... I will give an opportunity to you, Sir, thank you very much. Please be seated. Yes, sir. Please continue. Sir, thank you very much for affording me this opportunity to object the introduction of the bill. It is very difficult as far as I am concerned to even pronounce. A member from the South India, it finds it very difficult so as to even pronounce the bill. Name of the nomenclature of the bill, the Vikasit Bharat Shiksha Adhistadhan. I can't understand what is meant by Adhistadhan as the bill 2025. So my first objection is the nomenclature of the bill by virtue of Article 348, Clause B. The authority, notwithstanding anything contained in foregoing provisions of this part, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative text of a bill to be introduced or amendments there to be moved in either houses of the Parliament or in the House or either house of the legislature of the state shall be in English language. So the bill, the nomenclature of the bill shall be, it is not made. This is Article 348, Clause B, the authoritative text of a bill shall be in English, but unfortunately the bill, the nomenclature of the bill, it is being, I don't know which language it's, whether it is Sanskrit or Hindi, I don't know, the Vikasit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025, that is my first objection. And the second objection is regarding the issue that is the entry 66 in the schedule in the central list. I do agree with regarding the higher education, but unfortunately the education, even the higher education is also included in the concurrent list in the 7th schedule in the state list. Sir, 1972 through 42nd amendment, this education is put in the concurrent list. What is the purpose of putting it in the concurrent list? Before that it was absolutely within the domain of the state list. And what is the purpose of it? The main purpose is that the local resources and the requirements of the concerned state should be taken into consideration in framing the legislation in respect of the education. But as far as this bill is concerned, if you go through the contents of the bill, it is mandatorily the state governments and all the universities, even a university which is established under an act of the state government, they are bound to abide by the conditions of the commission. That means indirectly imposing the powers of the central government on which a right which is being vested upon on the state government means it is totally against the federal principles of the constitution, and it is centralization of the power
with the center. It is against the basic principles of the federalism which is envisaged in the Constitution. That is my second objection. And further the curriculum, the syllabus, and all these things are being determined by this University Higher Commission. The name is it is little bit different in Hindi. I don't know it, but I think that it is a Higher Education Commission. There also the political philosophy and the political ideology of the government at the center has to be imposed on the state. That is the main object and purpose of this bill, by which this bill is being brought in, by which the state's resources, the local requirements, and the state culture, tradition, language that will be taken away means that is also against the basic principles of the Constitution, the federal principles of the Constitution. And also I fully agree with the objections already raised by Mr. Manish Tiwari ji. Along with that objection, and also the bill is not being circulated in proper time, and it is being bulldozing in the House without having proper agenda in the list of business. That also I do object with this objection. So that we can have a detailed discussion regarding the introduction, and otherwise this may be withdrawn by the government. These are my objections. Thank you very much, sir. Professor Saugat Rai ji. Sir, already Mr. Manish Tiwari, Honourable Member, and Honourable Mr. Premchandran has opposed the introduction of the bill. But I first point out to the ineptness of the Ministry of Parliamentary Affairs. We got a copy of the bill late last time. Today in the list of business, the introduction of the bill was not mentioned. The supplementary list of business was circulated at 1 o'clock this afternoon. Now, is this the way the Parliamentary Affairs Ministry functions, where they do not even give us a chance to prepare for opposing the introduction? The main points opposing the introduction has been mentioned by Honourable Members Manish Tiwari and Mr. Premchandran. Sir, the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025 is an effort to centralize power in the central government's hand with regard to educational matters. Earlier, there was a UGC, University Grants Commission, which decided on allocating funds for educational institutions, both universities and colleges. Now, that is being taken over and subsumed into the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill. I do admit that under Article 66, the centre has the power to legislate on the educational matters, though it is in the concurrent list. Entry subject 25 is subject to entries 63, 66 of list 1. So Parliament cannot assume comprehensive control over state universities. We have so many state universities in West Bengal. The Parliament will have total power over this. They will appoint vice chancellors and all that. As it is the governors in Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, they are interfering with the functioning of the universities. Now this gives legitimate power to the centre to control the functioning of the universities in higher education. This is essentially undermines autonomy and independence of statutory regulating body and checks on executive power under Article 25. This bill, hence, should not be brought. We oppose the introduction. We oppose the ineptness, the failure of the Parliamentary Affairs Ministry. They do not even give us an opportunity to study a bill. Thank you, sir. Mananiya Shri Selvan This Ganpati is ji. not done. Sir, you are a learned man. Teneti, sir, you give a ruling on this. Let it be a historic ruling that this is not the way the Parliament should function. Thank you, sir. Sir, I raised to oppose the introduction of the bill titled the Vikshit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2020 under Rule 72 of the Rule of Procedure. Sir, the very name, the nomenclature itself is, we deem it to be an imposition of Hindi on those states which do not know Hindi at all. The reason, sir,
All these years, this government, any law they bring up, any scheme that they bring up, that they title it only in Hindi language and not as required by the Constitution of India. The Constitution is clear. The bill has to be, the name has to be, the nomenclature has to be in the language in English, so that every citizen, every part of the country knows what is the veracity of the bill. Sir, second, this against the federal principle of the Constitution. Sir, the concurrent list, the regulatory council under the commission proposed in the bill is against the spirit of the Constitution, particularly contravening the provisions under entry 32 of list 2. The power which entry 44 of the list 1 says the union government does not have power to regulate universities and is being vested with the union by this bill is arbitrary. Sir, in the name of the coordination and determination of the standards, the entire regulation of higher education institution comes under the Government of India, the union government. This is totally a colorable legislation that gives arbitrary decision-making powers to the union government. Sir, this bill is nothing but an abuse of process of law. As per various provisions of this bill, practically the union government will be the sole decision-making authority, which is against the spirit of the Constitution. The union government will have the final say as if the bill is passed, which is totally contrary to the Constitution. In the name of Bharatiya knowledge system, whatever is asked to be followed by the Commission and its 3 vertical pillars has to be implemented by the higher education institution, failing which the institute will be deemed to have violated the Act and its accreditation may be withdrawn. So they have an enormous power. Whichever university they want to completely deemed to be violation, they can reject the accreditation. Without accreditation, no institute can function, and the accreditation power lies with the accreditation council. Sir, we therefore we Thank you. Thank you, Thank you, Chairman, sir. On 3 grounds, I would like to oppose this bill. The bill's aggressive, unnecessary Sanskritized nomenclature directly violates Article 348(1)(b), which mandates that authoritative text of all bills shall be in the English language. There is no technical reason to use in Hindi names. 53 times Hindi names are used in this text of the bill. This Vinayam Parishad, இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. We don't எதுமே எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு நாங்க பேசுறது எப்படி உங்களுக்கு புரியலையோ அதே மாதிரி நீங்க இப்படி இந்த மாதிரி இந்தியை கொண்டு வந்து எங்க மேல திணிச்சா எங்களுக்கும் ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. So அதனால வந்து it should be in English so that whichever the state wanted to understand the language, that language has to be allowed in this bill. This sees I see this as a kind of Hindi imposition. Already Tamil Nadu been actually deprived of Samashkrit SSA funds just because of we are not agreeing to the 3-language policy in the new education policy. This is another way of imposing Hindi on state like Tamil Nadu, which is very successful in 12-language system. Second thing, this is an attack on the federal structure. This bill moves forward despite the parliamentary standing committees on education explicit finding that the bill maintains a union government heavy composition and insufficient state representation. Sir, actually, given that state public universities and their affiliated colleges educate over 81% of India's total students enrollment and govern a network of over 46,000 affiliated institutions nationwide. This policy-making body's composition must reflect the immense scale and responsibility held by the state education sector. Then executive overreach and undermining autonomy. The proposal moves decisively away from the independent regulation. Provisions granting the union government overriding power over the commission represent a clear attempt at executive outreach, fundamentally violating the doctrine of separation of powers by subordinating a key regulatory body of the executive. Clause 11(4) clearly states that regulatory council needs the prior approval of central government to provide or revoke authorization of higher educational institution, the authority to grant degrees. On this ground, I oppose the introduction of the bill. Thank you, sir. Thank you, ma'am. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ है हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करें। Sir, I introduce the bill and propose that this should go to. Sir, 1 second, sir. 1 second. I introduce the bill, sir. माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी। During the meeting in the Business Advisory Committee, many honorable members have requested that this is an extensive bill and we need further deliberation on this bill. So government hereby proposed to send it to joint parliamentary committee, and we authorize the honorable speaker to constitute the JPC in consultation with the other house and also with various political parties. Matter is placed. माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 14C, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. Thank you, Speaker, sir. Thank you, sir. माननीय श्री बी बेहानंद जी। माननीय श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. I rise to oppose the introduction of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025 under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha on the following grounds. First, the bill confers sweeping and pervasive powers on the central government across licensing, regulation, acquisition, tariff fixation, exemptions, emergency powers, and even novation of private contracts. Clauses empowering the centre to acquire mines, plants, reactors, substances and contractual rights by executive action, while compensation determined largely by the government itself raises grave concerns under Article 300A of the Constitution of India and the guarantee against arbitrary deprivation of property. Second, permitting profit-seeking private participation in ultra-hazardous nuclear activities while simultaneously limiting liability, granting statutory immunities and restricting judicial remedies undermines the state's non-delegable public trust obligations over life, health and the environment. Such an arrangement amounts to an unconstitutional abdication of essential sovereign responsibilities and functions under Article 21 and 48A, where the state is required to act as a trustee and a guarantor and not merely as a facilitator or a licensor. Third, the bill suffers from excessive delegation of essential legislative functions. Core policy matters such as liability limits, safety standards, exemptions, regulatory norms, emergency measures, and even amendment of schedules are left to rules, regulations, or notifications issued by the executive. This abdication of parliamentary responsibility violates settled constitutional limits on delegated legislation under Article 245 and 246. And finally, Mr. Chairperson, sir, the bill concentrates legislative, executive, regulatory, and quasi-judicial powers in the central government and authorities appointed, controlled, and removable by it, including the Atomic Energy Regulatory Board, which needs to be an independent, autonomous statutory regulator. The absence of institutional independence, coupled with wide direction-issuing powers and insulation clauses, undermines the doctrine of separation of powers, which is a basic feature of the Constitution. On these grounds, I strongly oppose the introduction of this bill. Thank you, sir. Honourable Minister, sir. No, Manish ji,
Manish ji is a good friend, his points well taken, but I just want to mention that most of these objections are based on the merits of the bill, which are normally and by convention taken up during the discussion. So right now we are here only to the competency of the introduction of the bill. माननीय श्री बेहनान जी, माननीय श्री बेहनान जी. He is not speaking. Call on N.K. Premchandran. माननीय श्री N.K. Premchandran जी. Sir. And on legislative competence, Premchandran ji. Yeah, sir. Thank you very much, sir. Sir, by Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I do oppose the bill, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. So my point is, it is against the principles, against the directive principles of the state policy in Part 4 of the Constitution of India. Because the entire purpose of this bill, promoting this bill, we are having the Atomic Energy Act. And also we are having all these legal mechanisms are also there. And you see that the nuclear energy as well as rare earth minerals and mining and mineral separation and the nuclear section, everything is being vested with the public sector undertakings. The basic purpose by which this law is being brought in is so as to privatize this nuclear energy sector for the private companies. I am not mentioning any companies. I am from an area, from the minerals, beach and mineral area, by which we are having abundant thorium is there, supply is there, but unfortunately it is not being exploited and utilized by the government public sector undertakings so as to make use by the private entities and the private corporates for which this bill is being brought in. So it is against the directive principles of state policy. Therefore, I strongly oppose the introduction of the bill on the basis of this objection. Thank you very much, sir. Shri Professor Saugat Rai ji. I oppose this bill with a long name, Sustainable Harnessing of etc. etc. Now, this bill is being a watershed in the history of development of nuclear power in the country. You know, the Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, he set up the Atomic Energy Commission. The Atomic Energy Commission made significant progress in harnessing atomic energy. We had our first nuclear power plant in Tarapur. India undertook 2 nuclear implosions, whatever you call it. First at Pokhran in '74, then under Atal Bihari Vajpayee, again in Pokhran in 1998. So nuclear energy has been a matter which has exercised. Kindly be seated, please. Excuse me. Importance to repeat. Remember, sir, in 2004, Mananiya Sanjay Jaiswal ji, during Manmohan Singh's prime ministership, there was a big dispute in the country over nuclear liability bill should be introduced. Manmohan Singh's purpose was to get nuclear energy technical know-how from America and other countries. Now this is a new step where slowly the nuclear energy sector is sought to be given over to private sector. The government has been talking about this for some time, and now we have the Adani's big in power sector. Now they want to get into nuclear power sector, and this bill is meant to facilitate Adani and other people. 1 second, sir. I heard you, sir. Mananiya Mantri Shri Kiran Rijiju ji. Since honorable members are repeatedly raising the opposition, opposing the introduction of the bill, today we are not passing the bill. There is no proposed for consideration. It is only introduction of the bill. And most of the opposition are coming, which are repeatedly being mentioned by honorable member, including what Manish Tiwari has mentioned. I have a specific point only. Under Rule 72(1), it is very specific on the legislative competence of this House to bring this legislation. Yes. And under Schedule 7 of the Constitution, in the list of union list at serial number 6, it is very specific. Atomic energy and mineral resources
necessary for its production. Yes. So this House has very much have its full legislative competence to bring this bill. And as the Honourable Minister has stated, if there are consideration on merits, it should be brought out at the time of consideration. At this point of time, it is only introduction of the bill. So that will come back. Today we are not putting it for consideration. Sir, if we assume that it is not in the competence of the House to bring, even if it is assumed that it is not in the competence of the House to bring in a bill related to nuclear energy or atomic energy, may I remind the honourable members and the House that the same House brought the Atomic Energy Act 1962 when Panditji was the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and the same House brought the CLND bill when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So, if the bill could be brought in the House when Nehruji was the Prime Minister, when it could be brought when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, why now suddenly, because there is a different political party in power, suddenly the House has been forbidden from the prerogative of bringing in a bill on this subject? Yes, sir. I heard both the sides. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने के अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के हुआ, पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनः स्थापित सर, I introduce the bill. आइटम नंबर 16 अनुदानों की अनुपूरक मांगे, श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति जी। पूरक अनुदान मांगों के लिए 2025-26 72 अनुदान मांगे शामिल हैं। कुल राशि 1,32,268 करोड़ रुपए और अतिरिक्त अनुदान की मांग 41,455 करोड़ रुपए। इसमें दो तिहाई यानी कि 27,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी पे खर्च करने की बात कही गई है। मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है, क्योंकि ये ना केवल व्यर्थ का खर्च है बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नज़रअंदाज करने का प्रमाण भी है। मान्यवर, किसानों के लिए जो रासायन उर्वरक पे मांग रखी गई है उसमें ज़्यादातर जो धन है वो सब्सिडी के लिए रखा गया है। मान्यवर, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा। लोगों को ना तो फास्फोरस पोटास मिला, ना यूरिया मिली, ना DAP मिली। मान्यवर, इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रुपए सब्सिडी पे लगाने की बात कही गई है। महोदय, आज जहां हमारा किसान MSP की मांग को लेके दर-दर भटक रहा है और उसको MSP नहीं मिल रही है, किसान सड़कों पे खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पे विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को केवल महंगाई, कर्ज और आत्महत्या करने पे किसान मजबूर है। हम मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए, आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी मान्यवर अनुपूरक का कोई महत्व होगा। मान्यवर, बहुत सारे विभागों की बात इसमें चर्चा की गई है। हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पे बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग
कार्य कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो अनुपूरक मांगा गया है उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1303.72 करोड़, इसमें 2023.25 करोड़ की एक नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़। सभापति महोदय, ये क्या मजाक है जब भारत के जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आज वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 42.63 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जबकि जो SC ST के लिए मात्र 2.04 करोड़ और ST के लिए तो केवल 33 लाख रुपए की मांग की गई है। ये भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार का जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलीट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता। हमारी मांग है बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, RTE को मजबूत बनाएं, ना कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके ये जो 90,812 करोड़ के ग्रास वे का हिस्सा है, जो सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहाँ से आई? शिक्षा बजट में कटौती करके आई है। तो शिक्षा के बजट को काटा ना जाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए। ये हम आपसे, सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं। मान्यवर, अनुपूरक जो बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबड़ फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक जो बेरोजगार हो चुके हैं। फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारियों का मामला भी लंबित है। मान्यवर, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य देयों का समुचित भुगतान नहीं किया। सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने के पर मजबूर हैं। सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी अगर इस अनुपूरक में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन मान्यवर, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम सब लोग यहाँ 543 लोग चुन के आते हैं। मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि एक यहाँ से नारा दिया जा रहा है विकसित भारत का नारा, और हम लोग खास करके जो मेरा आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। मान्यवर, जब हम लोग जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो हमसे कुछ विकास की बात करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन मान्यवर, सरकार ने जब केंद्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली। लेकिन मान्यवर, हम सांसदगण जिनको बहुत कम सांसद निधि दी जाती है 5 करोड़ की, आप कृपया कंक्लूड। जब हमारे पास विकास की कमी आए या हम लोग नहीं काम कर पाते तो हम किससे पैसा मांगे? इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस विकास में सरकार को हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है कि सांसद निधि सन 2010 में 5 करोड़ की गई थी। 5 करोड़ तब की गई थी जब GST नहीं थी। आज पूरे देश की कई विधानसभाओं में जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन उनकी निधि
हम सांसदों से ज्यादा है। मान्यवर 5 करोड़ कहा जाता है, उसमें भी 10 लाख कंटीजेंसी काट लिया जाता है माननीय और जीएसटी लगाई जाती है। धन्यवाद। इसलिए मान्यवर प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए। आप माननीय प्रोफेसर सौगत राय जी, मान्यवर कंक्लूड कर रहा हूं बस थोड़ा। मान्यवर 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पे विचार नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती, और अगर विकास कराना चाहती है तो इस सांसद निधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों के हम लोग छोटे छोटे काम कर सकें। मान्यवर सभापति महोदय, मैं अंत में प्रोफेसर सौगत राय जी, यस। उनको रोकने को बोलिए। नहीं, सौगत राय जी आप बोलिए। नहीं, आपको 3 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं सर। आप 20 सेकंड में रखिए, आप 20 सेकंड में रखिए। यस, सौगत राय जी आप बैठ जाए। 20 सेकंड्स प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो गड़बड़ लग रही हैं। रुपए 1,32,00,000 लाख करोड़ का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहाँ है? ये सरकार अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेके आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सब्सिडी से कारपोरेट्स को ना ध्यान दिया जाए, प्रोफेसर सौगत राय जी, जो हमारे गरीब जनता है उसका ध्यान दिया जाए। मैं इस अनुपूरक का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर next honorable member T.R. Baluji will be speaking, so kindly. I rise to speak on the supplementary demands for grants. I resent the fact that the finance minister is not here. Even the minister of state, he is there, he has become president of UP BJP. What will he look into finance? Sir, this demand is one for additional 41,000 crore spent. 41,000 crore please look at budget me. Yeah. Outgo. But actually the total supplementary demands is rupees 1.32 lakh crores. Out of this, 90,000 is technical, because this amount will be made up from savings of different departments. 41,000 crores roughly will be outgo from the government. Out of this 41,000 crores, fertilizer is 18,000 crores. And out of that, 11,000 crores is for fertilizer subsidies, 7,000 crores is for import of urea. And 9,500 crores to Petroleum Ministry, out of which the oil companies will be made up for their loss as far as LPG is concerned. Unfortunately, this country produces only 33% of its petroleum requirement, so you can understand the situation. Now, I would say that the finance minister has tried to do a reasonable job in the sense that only 4.4% is the fiscal deficit target we shall be able to meet this year. So even though the finance minister does not have a finance background, she has worked hard, I must say. But there are severe fault lines in the supplementary demands. What are the fault lines? Urea is in crisis. Farmers are lining up every day from the morning to get urea. Urea is being sold in black market. The government is doing nothing about that. Our production will be hit because of lack of urea. So, second thing I want to mention is that oil marketing company, they want to be fully compensated for their loss in supplying LPG.
So we may be in for another LPG subsidy, LPG price rise. I would urge the government that let them give more money, but not increase the price of LPG. Now, are you saying that there are some fault lines in this whole budget? Why? Because even though we are controlling this thing, another is Vodafone. Vodafone government is considering relief for the financially stretched telco. So I would like to know whether government will actually give the answer. Now, sir, you are a studious man. You must have noticed 5 months ago, Modi's friend Trump, he said that India is a decaying economy, finished economy. This is what Trump said. I want to know what the central government says. Sir, the IMF has said that India is in C category. As far as IMF retained its C grade for India's national account statistics or GDP data. So even though the कमलेश जी आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, हमारा बात नहीं सुनेंगे एकदम। Sir, GDP, they are saying that GDP growth is increasing. But IMF is saying that this is C grade in statistics. The government will have to reply what they are saying about. Sir, everybody will congratulate you for your election. But you listen to me. Sir, the other point I want to say is that where we are terrible is the rise in the fall of rupee. Rupee against dollar became 89.46 against the dollar from 89.12 against the euro. Our currency has fallen against all other major currencies, more against euro and also against the dollar. So we are in a very bad situation. All imports, including petroleum imports, will cost more. This is very bad. So we have to reply to Trump that we are not a dead economy. He said it on record that India is a dead economy. That's why you are not in a hurry to have a trade pact with India. IMF has given them a C grade. So we should be very concerned about all this. And you know, sir, we are discussing education a little while ago. India's rank in the Human Development Index is United Nations, UNDP, is 130. We are 130th country in the name of Human Development Index. That is on health, education and other matters. What has the government to answer about that? I don't want to speak for a long time, since Pratima Mondol will speak on our party. Sir, I want to pose one question. Why is the finance minister depriving West Bengal in the matter of MG-NREG? This year, the NREGA dues to West Bengal was 7,000 crores. For the last 2 years, it's 52,000 crores. And total dues of West Bengal is 2 lakh crores. So why West Bengal is being deprived? You think we shall be kept down forever? No. We have already protested. We shall continue to protest. There are some people who are inimical to West Bengal, like Shukanto Mojumdar. They don't want West Bengal to get money. But in spite of everything, we shall give poor people their sustenance and we shall win the elections in 2026. That's why supplementary demands
is an essential part of the budget making exercise. We know that if the government has shortfall, it has to be made up. We know that there is also technical savings in the sense that they will be made from savings of other departments. So in this way, another technical supplementary expenditure is rupees 8,337 crores is sought for transfer to monetization of national highways, fund infrastructure investment draft, INVIT, and rupees 35,950 crore is sought for investment under conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. So all is not well in the state of Denmark. Even though the government says our economy will be third economy in the world, it will be $1 trillion economy. Economy has serious fault lines. I hope that the finance minister who insulted this house by not coming to the house in the time of debate will reply to all these questions whenever she comes here. Thank you, sir. Honorable Thiru T.R. Balu, sir. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த மாமன்றத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் முதல் துணை மானிய கோரிக்கை 1,32,000 கோடிக்கான துணை மானிய கோரிக்கையில் பேசுவதிலே எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தாலும் இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் இந்த 1,32,000 கோடிக்கு ஆன அதிகப்படியான செலவு எப்படி வருகிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற நேரத்தில் 2 வகையாக பிரித்து சொல்கிறார்கள். ஒன்று 90,812 கோடி ரூபாய் அதிக வருவாய் வந்ததாகவும் சேமிப்பு வந்ததாகவும் ஒரு வகையிலே சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த அதிக செலவினங்களுக்காக 41,400 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்களுக்காக அது தேவைப்படுகிறது சொல்கிறார்கள். முன்னாலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அந்த 90,812 கோடியில் அவர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டிய ஒன்று, எதிர்பார்க்காமல் வந்ததல்ல. சேமிப்பு என்றால் சேமிப்பு எப்படி வரும்? சேவிங்ஸ் பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்களா? இல்லை. அந்த பணம் அவருக்கு வழங்கிய பணம் அதிகப்படியாக அதிக தொகையை முன்னாலேயே ஜெனரல் பட்ஜெட்டில் முதலாக அளித்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறார். அது திரும்ப வருகிறது, திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. அதே போல அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று சொல்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை. எப்படி என்று கேட்டால், பணம் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அதிக வருவாய் என்று சொல்கிறார்கள். எப்படி அதிக வருவாய் வரும்? அதிக வருவாய் என்றால் ஏதாவது அவருக்கு வணிகத்துறையில் ஈடுபடுகின்ற இலாக்காக்கள் வைத்திருந்து அந்த வணிகத்துறையின் மூலம் அதிக வருவாய் வந்திருக்கிறதா? இல்லை. ஆக இரண்டுமே குளறுபடிகளாக நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 41,455 கோடி ரூபாய் அதிக செலவினங்கள் வருகிறது. ஆகவே எங்களுக்கு இந்த நிதி இந்த மானிய கோரிக்கை நான் சேர்த்திருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். 41,455 கோடியில் 18,525 கோடி ரூபாய் உரமானியமாக இருக்கிறது. 9,500 கோடி ரூபாய் கச்சா எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கின்ற மானியமாக இருக்கிறது. இது ரெண்டும் ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். உரமானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒன்று. அதே போல கச்சா எண்ணெய்க்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பெட்ரோலியத்துறையில் கொடுக்கப்படுகின்ற மானியம் என்பது ஆண்டுதோறும் வருகின்ற ஒன்று. இது எப்படி எதிர்பார்க்காமல் இருந்தார்கள்? அது மட்டுமல்ல, உள்துறைக்கு 2,500 கோடி ரூபாய், 1,200 கோடி ரூபாய் வெளியுறவுத்துறைக்கும் 1,300 கோடி ரூபாய் கல்வித்துறைக்கும் அவர் வழங்கியிருக்கிற காரணத்தினால் ஏறத்தாழ 41,500 கோடி ரூபாய் புதிதாக அவர்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நியாயமில்லை. ஏனென்றால் இதெல்லாம் முன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும்.
முன்னாலே அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் இந்த தொகையை ஏன் அவர்கள் முன்னாலே முதல்ல அறிவித்த நிதிநிலை அறிக்கையை சேர்க்கவில்லை என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி. அவர்கள் பதில் உரைக்கின்ற பொழுது இதற்கு 90,812 கோடி ரூபாய்க்கும் அதே நேரத்தில் 41,450 கோடி ரூபாய்க்கும் உள்ள விளக்கத்தை அம்மையார் அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நிதி மானிய கோரிக்கையில் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், அவர்கள் IMF அகில உலக மானிட்டரி அகில உலக ஆணையம், அந்த ஆணையம் நிதி ஆணையம் என்ன சொல்கிறது? இவர்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்படுகின்ற நிதி நிலை அறிக்கைகளும் அவர்கள் கையாளுகின்ற கணக்குகளும் சரியாக இல்லை, எல்லாம் சப்ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, தரக்குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்வது மட்டுமல்ல, நம்முடைய நாட்டினுடைய நிதிநிலையை அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி தரக்குறைவு என்று சொல்லி சி கிரேட் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள். இந்த சி கிரேடுக்கு போனதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன நியாயமான காரணங்கள் என்ன? ஏன்னா 10.1% இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கை முதலிலே வைக்கிற நேரத்தில் 10.1% இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஜிடிபி. அதற்கு பிறகு இப்போது என்ன சொல்கிறார்கள்? 8.2% தான் ஜிடிபி என்று பிரதமரே ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஆக 2% திடீரென்று குறைந்ததற்கு என்ன காரணம்? இப்படிப்பட்ட மோசமான நிலையிலே இந்திய பொருளாதார வீழ்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் தரக்குறைவா அந்த தரத்தை சி கிரேடுக்கு ABCD என்ற நிலையில் சி கிரேடுக்கு அவர்கள் தள்ளியிருக்கிறார்கள். ஆக இப்படிப்பட்ட நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்திய அரசினுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் நிச்சயமாக பலரும் சந்தேகப்படுகிறார்கள். டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம், அதே போல டாக்டர் அரவிந்த் குமார், இவங்க 2 பேருமே இந்தியாவினுடைய மிகச்சிறந்த பொருளாதார நிபுணர்கள். அவர்களே இப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களே இதை நம்ப முடியாத நிலையில் இருக்கிறது என்று அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, செஸ் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி, இந்த செஸ் வரி ஆண்டுதோறும் வசூல் பண்றாங்க. செஸ் வரி குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட துறையில் அதை வசூல் செய்வாங்க. அந்த நிலை சரியான பிறகு அதை திரும்ப பெற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலாக்காவுக்கு அந்த பணம் போய் சேரணும், செஸ் வரி போய் சேரணும். அப்படி போகல. குறிப்பாக 1975 போடப்பட்ட பெட்ரோலிய செஸ் வரி இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2.9 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் கோடி வசூலாக இருக்கிறது. இந்த 3 லட்சம் கோடி 2.296,000 கோடி வசூலானதுல 902 கோடி மட்டும்தான் பெட்ரோலியத்துறைக்கு போகிறது. பெட்ரோலியத்துறையில் OIDB என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது, ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு. இந்த ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு இந்த 2,95,000 கோடி அங்கே போயிருக்கணும். ஆனால் போனதா இல்லை. அங்கே போயிருந்தா புதுசா திட்டங்கள் வந்திருக்கும். இந்த எண்ணெய் பற்றாக்குறை, கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறை 20% மேல இருக்குது. 80% இம்போர்ட் ஆகுது, வெளிநாட்டிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகுது. இந்த இம்போர்ட் வெளியூர் துறையிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகிற நிறை எல்லாமே போயிருக்கும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கினங்களுக்காகத்தான் IMF துறை இன்றைக்கு சி கிரேட் என்று நம்மை தாழ்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கவலையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்போது அது மட்டுமல்ல, அவருடைய துறை, இந்த இந்தியனுடைய நிதித்துறை அவருடைய இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற துறையை நம்ம சரியாக நடத்துவதில்லை. எப்படி நடத்துவதில்லை என்றால் இப்படித்தான். செஸ் வரி வாங்குறாங்க, வாங்கிட்டு இவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. 902 கோடி ரூபாய் மட்டும் பெட்ரோலியத்துறை கொடுத்துட்டு மீது 2,90,000 கோடிக்கு மேல அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க. இது நியாயமா என்பதை கேட்க விரும்புகிறேன். ஒன்று, இதை போலத்தான் மாநில அரசுகளையும் ஏமாற்றுகிறார்கள். I need some 5 or 10 minutes, please. மாநில அரசுகளை ஏமாற்றுகிறார்கள். எப்படி ஏமாற்றுகிறார்கள்? மன்ரேகா திட்டம். இந்த மன்ரேகா திட்டத்தை காந்தி பேருக்கிறதால இன்னைக்கு மாத்திரத்தை முயற்சி பண்ணுகிறாங்க. மிக மோசமான நிலையில் இந்த அரசு போய் கொடுக்குறது. இதே ஒன்று எடுத்துக்காட்டு. இன்றைக்கு 100 நாள் வேலை திட்டம் குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல, 30 கோடியை மனித நாட்கள் தமிழகத்திற்கு இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு 12 கோடி மனித நாட்கள் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை விட கேவலம் என்னவாக இருக்க முடியும்? 1,290 கோடி ரூபாயை மாநில அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரணும். இதுவரைக்கும் தந்தபாடு இல்லை. 1,290 பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை
தமிழ்நாடு அரசு பொருள்களுக்காக வழங்கிய தொகை இதுவரை வந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, ரயில்வே துறையில் 31,450 கோடி திட்டம். அந்த திட்டத்தில் 301 கோடி மட்டும்தான் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 0.95%, 1% கூட இல்லை. ஆனால் தமிழகத்திலிருந்து மத்திய அரசுடைய வரி வருவாய்க்கு கொடுக்கப்படுவது 1 லட்சம் கோடி. இந்த 1 லட்சம் கோடி வாங்கிட்டு 301 கோடி மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க சொன்னா அது எப்படி சரியா வரும்? ரயில்வே துறைக்கு 301 கோடி, இது எப்படி சரியா வரும்? மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வந்து 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் திட்டங்களை அனுப்பிச்சோம். 5 வருஷத்துக்கு முன்னால் அனுப்பிச்ச திட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால திருப்பி அனுப்புறாங்க திட்டம். மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மிகப்பெரிய நகரங்களாக இருக்கின்ற 2 இடத்துக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வேணும் சொல்லி நாங்கள் அனுப்பிச்சதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம திடீர்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா 20 லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு குறைவாக இருக்கிறது. அது 2011 சென்சஸ். 2011 சென்சஸ்ல எடுத்த போது 20 லட்சம் மக்களுக்கு குறைவாக இருக்காங்க, அது உங்களுக்கு கிடையாது என்று இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், ஆக்ராவில், இந்தூரில், புவனேஸ்வரில், நவி மும்பையில் இந்த கணக்கு வராதா? அது மட்டுமல்ல, ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறது, திட்டத்தை நிறுவது ஜனத்தொகை கணக்கு பார்க்கறதா, வயபிலிட்டியை பார்க்கறதா, லாப நஷ்டத்தை பார்க்கறதா, திட்டத்தில் லாப நஷ்டம் வருதான்னு பார்க்கறதா, அல்லது ஜனத்தொகை கணக்கை பார்க்கறதா? இந்த முறை மிக மோசமாக இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்வேன். அதோட பூந்தமல்லியிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர், இந்த 10 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, முடிந்து போனது, சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த திட்டத்தை இதுவரை துவங்கி அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இது மிக மிக மோசமான நிலை என்பதை இந்த ஒன்றிய அரசு எப்படி தமிழக அரசை நடத்துகிறது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. மாய்ச்சர் கண்டென்ட், விவசாயிகள் நெல்லை விளைவிக்கிறாங்க. செப்டம்பர் மாதத்தில் மழை பெஞ்சு அந்த மாதிரி மோசமான நிலை வந்த பிறகு அறுவடைக்கு போகின்ற நிலை, அறுவடை பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அறுவடை பன்றிய நெல்மணிகள் களத்து மேட்டுக்கு வருது. களத்து மேட்டில் இன்னும் ஈரப்பதம் அதிகமாகிறது. 17% தான் ஈரப்பதம் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 22% வேண்டும் என்று தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திரும்ப கடிதம் எழுதுகிறார், கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆனால் இவர்கள் தரவில்லை. இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க? தஞ்சாவூர்ல எங்க இந்த நிலை ஏற்பட்டதோ, தஞ்சை டெல்டாவிலும் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டுல இந்த நிலை ஏற்பட்டது. தஞ்சாவூர்ல இவங்க மாநாடு போட போறாங்களா? யாரு? அடுத்த 2-3 மாசத்துல பிரதமர் போக போறாரு. பிரதமர் போகும்போது என்ன வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த 17%-இருந்து 22% என்பதை அவர்கள் கொடுப்பதற்கு தவிர்க்கிறார்கள். அடுத்தது கல்வி திட்டம், சமக்ர சிக்ஷா SSA ஸ்கீம். இந்த SSA ஸ்கீமுக்கு 3548 கோடி கொடுக்கணும். இந்த 3548 கோடியை புறக்கணிக்கிற முடியாதுங்கிறாங்க. ஏன் முடியாது? கல்வி திட்டத்தை ஏற்றுக்கணும். கல்வி திட்டம் இட் இஸ் நாட் an act, it is a policy only. ஒன்றிய அரசுடைய கொள்கையும் மாநில அரசு கொள்கையும் வேறு இருக்கலாம். இதை நீங்க எப்படி எங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியும்? அந்த எங்களுடைய கொள்கை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இன்னைக்கு இல்லை, எப்போதும் இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாத தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நீடிக்கும். இது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய கொள்கை, அண்ணன் கலைஞர் அவருடைய கொள்கை. இந்த திட்டத்திலிருந்து நாங்கள் மாறவே மாட்டோம். இந்தி என்றைக்கும் கிடையாது தமிழகத்தில் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். 2010 ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் தமிழ்நாட்டில் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆசிரியர்களுக்கு புது கொள்கை வகுக்கிறார்கள். நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்றாதான் நீங்க ஆசிரியராக தொடர்ந்து போக முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். 2010 அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கு 2024, 14 வருஷம் கழிச்சு 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க தகுதி தேர்வு பெற்று நீங்க பாஸ் பண்ணாதான், தகுதி ஏற்பட்டாதான் நீ தொடர்ந்து ஆசிரியராக தொடர முடியாது. முடிவதற்கு சான்ஸே கிடையாது. மத்திய அரசு நேரடியாக கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகி புதிதாக அவர்களுக்கு அனுமதி வாங்கி தர வேண்டும். இல்லை என்றால் 4 லட்சம் ஆசிரியர்களுடைய நிலை என்னவாகும் என்பதை அவர்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆகவே என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர்களே, we demand immediate release of pending MNREGA funds due on restoration of labor and materials allegation. Number 2, to approve the increased moisture content of paddy 22% from 17%. Immediate approval of
metro projects, Coimbatore and Madurai. Immediate release of rightful due of 3,548 from SSA scheme without any further delay. ஆசிரியர்களுக்காக 2010 வழங்கப்பட்ட அந்த பணி தொடர்ந்து நீடிப்பதற்காக அரசு இந்த ஒன்றிய அரசு நீதிமன்றத்தை நாடி புதிய அரசு ஆணையை பெற்று அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you. Thank you, honourable member. Sri K.C. Neni Sivanathji. Thank you, sir. I raise to speak on first batch of supplementary demand of grants for year 25-26. This batch covers 72 grants with government seeking Parliament's approval for additional gross of 1.32 lakh crores. Sir, some of honourable members from opposition have spoken about economic disorder, but the facts are different. Under the leadership of our Honourable Prime Minister Narendra Modi ji, FDI has crossed 81 billion USD. MSP for major crops has gone up by 50 to 70% with record procurement helping farmers, and over 75% of defence capital budget is now kept for Indian industry, boosting jobs and national security. Now speaking about supplementary demand for grants 25-26. Under these supplementary grants, Minister of Chemical and Fertilizers has been reappropriated 31,000 crores, a significant portion of which will strengthen urea subsidy scheme, sir. Sir, urea is not only a fertilizer, it is the backbone for crop growth. Any delay in supply threatens entire agricultural cycle. This year, Andhra Pradesh faced sudden surge in demand during peak Kharif season. At this critical moment, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu ji personally intervened. He took up issue with Union government. The Minister J.P. Nadda ji, who swiftly responded, releasing fresh stocks and ensuring uninterrupted supply across the states. This timely assistance protected our farmers, our crops and their livelihood. Sir, an amount of 18,800 crores has been reappropriated to the Ministry of Road Transport and Highways. The Union government has built 10,660 kilometers highways in financial year 25, exceeding its target of 10,400 kilometers. This indicates government commitment to ensure connectivity across the country. Another critical transport project to ensure connectivity is the metro rail. Sir, among all the southern states, Andhra Pradesh is the only state without metro rail system. In this background, Vijayawada and Vizag metro projects are not just transport systems, they are necessary for the growth of this region and achieving Prime Minister's goal of Viksit Bharat. Sir, 1,303 crores is being reappropriated to Ministry of Education. One of the key sectors in education is medical, for which building of new colleges are essential. Sir, when there is a crunch in financial resources, the central government from time to time comes up with innovative models to ensure development does not stop. But sir, YSRCP party today in AP is opposing the development of medical colleges. This is the sector they themselves neglected with inaction and false promises. They promised to build 17 new medical colleges, but the truth is that not even a single stone was laid to most of them. In 4 years of YCP government, instead of 85,000 crores, they have spent less than 1,000 crores. In this space, it will take 15 years for completion of these 17 medical colleges. Sir, after failing so badly, the same party now opposes nationally approved PPP model. The Department of Economic Affairs, Government of India has notified this model, and the apex body of medical education, the National Medical Commission, has recommended to build PPP medical colleges. Sir, and also the House Standing Committee on Health also recommended this colleges of this model. Yet YSRCP is against this model because they don't understand the difference between PPP and privatization. Sir, under PPP model, the government keeps full control while the private partners only support infrastructure, operation and completing the construction within 2 years.
Half the seats remains under government quota, all the reservations stay same, and the fees for these seats are capped to protect the students. In these hospitals, 70% of beds are reserved for Ayushman Ayushman Bharat patients. This model ensures better infrastructure while safeguarding students and poor. Sir, if YSRCP is really committed for public, they would have not spent 500 crores government money to build a palace for their chief minister, a gross ugly waste of public wealth. They could have instead used 500 crores for operational of these medical colleges. Their opposition to medical colleges through PPP model exposes their hypocrisy. Neither they will work nor they will allow anyone else to work. They cannot digest the development being pursued by our Honorable Chief Minister Nanda Chandrababu Naidu ji. Finally, sir, I conclude the supplementary grants show the government's clear commitment to welfare, agriculture, education and health. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has delivered 8.2% of GDP growth despite of global uncertainty. Together we build a stronger and brighter nation to our people. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member. Mananiya Sadasya Shri K.C. Venugopal ji. Honorable Chairman, sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of supplementary grants for demands. Basically, these demands for grants introduced in December 2025, about 72 demands and 1 appropriation. Sir, today the truth, the Indian economy is staring in the rise. Indian economy is staring in the face, sir. The rupee is weak, sir. Prices are high. Job is lacking, and confidence is collapsing. This is not a bad luck, sir. Bad governance of this government. The rupee has fallen to its lowest ever, closing 90 against the US dollar, and still siding, sir. This is not a small technical issue. When Honorable Finance Minister is not there here, 1,32,000 rupees they are asking from the Parliament, but Honorable FM is not here. Supplementary demands, I think FM's presence is needed. When we are talking about the rupees lowest price, she used to reply to us that it is not going to affect the economy at all. But what is the real thing, sir? It means it will higher the fuel prices, it will costlier imports, sir, and rising pressure on the common man actually. And Honorable Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, he has told the rupees reaching, that point of time, rupees reaching 58 against US dollar. Then what he told, sir, seems there is a competition going in between the rupee and the government in Delhi about whose dignity goes down faster. This was told by our Honorable Prime Minister, sir. Now, sir, now rupees is now 90 against the US dollar, then whose dignity is now lowering, sir. That point of time, then Gujarat Chief Minister compared to the Delhi government. Now the rupees is 90, then whose dignity is now lower? Certainly union government dignity is lower comparing to the rupees. Very, very unfortunate, sir. Sir, even more worrying is that the GDP rates that are given by the government is totally questionable internationally. They are questioned internationally. The IMF has flagged serious weakness in India's GDP data. Still the government is telling our GDP is better, but IMF still is already contesting it. So I would like to point out the concern with regard to the Ministry of Road Transport and Highway. We are passing the demands for supplementary demands for road transport and highway, sir. For the year 25-26, the Ministry of Road Transport and Highway proposed an expenditure nearly 2.87 lakh crore, which is higher than last year. The allocation for roads and bridges alone is more than 1.16 lakh crore. India today has the second largest road network in the world. I agree, sir. National Highway network is developing and expanding. But Speaker, sir, the House must ask a fundamental question, sir. If the massive spending resulting in safe roads, sir, accountable governments is there, and value for public money is there in this. Or is it creating a system where public funds are converted into private few for a chosen few? The debate is not about opposing highway development. We are all for development, sir.
but debate is about the corruption happening in this area. Sir, the Bharatmala project we discussed so many times. It was intended to complete within 5 years. Now it is already 8 years already over. 50% of the work is not completed. Sir, now I am coming to my state, Kerala, sir. The consequences of reckless model are most visible in Kerala, sir, now. From Kasaragod in the north to Kollam in the south, national highway projects, two major stretches, NH66 and NH544, are collapsing before the eyes of the public. It's virtually collapsing, sir, roads. I think you are also aware of that. The roads are collapsing like anything in national highway in Kerala stretch, sir. Elevated structures are sinking, retaining walls are collapsing, service roads are flooded, and fresh cracks are appearing on newly constructed roads. Sir, in May this year, the entire stretch of elevated highway in Koread was collapsed. The scene was catastrophic. The entire stretch is now beyond repair. Recently, NH wall in Kollam has been collapsed. Our Ramachandran raised this issue already. I can list out dozens of such incidents, sir. Sir, the problem, what is the problem? What is the problem? In my own constituency, one death was happened. 40 people died because of this construction site. There is no proper management. So what is happening in Kerala is not act of nature, sir. It is the result of a system where speed and profit were prioritized over safety and scientific planning, sir. Sir, the House must understand that these failures are not accidental. They are the outcome of a development model designed to maximize corporate profit, not public safety. And this brings me to the core issue behind the supplementary demand, basically the highway scam, sir. Let us look at one project, Adiyur Vengalam stretch of NH66 in the North Kerala. A road of just 40 kilometers. This project was awarded to Adani Enterprises for 1,832 crore. Adani did not build, sir. What they have done? Adani did not build. He subcontracted the entire work to Wagad Infra Projects, an Ahmedabad-based firm, for just 971 crore. You see, sir, the total contract was 1,838. He has given the subcontract to 971 crores, almost half the amount. The actual construction cost is therefore 23.7 crore per. Basically, the actual construction cost is 23.7 crore per kilometer. But Adani is being paid 45 crore per kilometer, sir. Sir, Adani will earn 2,043 crore from this one project alone, an excess profit of 1,310 crore funded entirely by public money, sir. This route is legal, sir. I am not telling it is illegal. This route is legal because the system was designed for it, sir. Kerala NH66 six-line highway project has been divided into more than 19 phases. Some of these phases are being executed under the EPC model and some are in the HAM model. Projects executed under EPC model in Kerala have cost between 26 crore and 32 crores per kilometer, even with higher complexity. The bridges are there. Actually, the area is designed. Area is also very much complicated, but their money is lesser. The scam is not accidental, sir. It was designed and facilitated through the hybrid annuity model HAM introduced in 2016 under the Modi government. Here is how HAM works. 40% of the project cost is paid during the construction itself. 60% is paid over 15 years annuity with interest of the bank rate plus 3%. A separate contract covers 50 years of maintenance on top of the 1,838 crores. Sir, you can see that in this case, the contractor got 735 crore during the construction itself. He will get 1,102 crore over 15 years as annuity. He will also get 940 crore as interest. He spent only 97 crores and earns over 2,043 crores.
This is the profit margin more than 1,000 crore without laying a single brick himself. Just a minute. Rule. Mister, what's the rule? What's the rule? Rule 216. Please. 216 ये कहता है, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर सांसद हैं, पीएससी के चेयरमैन हैं। रूल ये कहता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जिन चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स आया है, केवल और केवल उसी के लिए चर्चा हो सकती है। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं हो सकती, न किसी पॉलिसी की चर्चा हो सकती है। इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए उनको केवल डिमांड पर कहिए सर। ये रूल हमने नहीं बनाया है, रूल आपने बनाया है, रूल मावलंकर साहब ने बनाया, हमने नहीं बनाया। यही 216 है सर, रूल यही है। इसीलिए उनको कन्फाइंड करिए सर कि केवल और केवल वो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर ही चर्चा करेंगे, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर। माननीय My colleague in the honorable member, Venugopal. My colleague in the Treasury bench, Srikanth ji, point out a point of order. Under Rule 216, Sir, we are giving supplementary demands. They are asking for national highway also, sir. I quoted that. They are asking supplementary demand for national highway. It's okay. Then we cannot discuss about national highway project, sir. No. You Then what else we have to discuss, sir? But What else has to discuss, sir? Sir, let me come. Only 3-4 minutes I will take, sir. 216. Sir, you have to follow the rule 216. Sir, I am serious. I am seriously taking it, sir. Sir, this is a concern of our state, sir. Sir, this is a concern of our state. Every day road is collapsing, sir. Every day road is collapsing. People are in a very much fear complex. Please. Just 216, the rule. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same, and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them, save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. You are a senior member of the House. You should follow the rules. The issue of national highway, where the finance is demanding amount from Parliament. The finance ministry is demanding to the Parliament that this much amount has to be given to National Highway Department as a supplementary demands for grants. That's why I am speaking about that. This is one of the major issue Kerala is concerning, sir. Every day, road is collapsing, bridge is collapsing. People are in a fear complex. Sir, people are dying, sir. Sir, if you are not discussing in the Parliament, where it has to be discussed, sir? If you are not discussing in the supplementary demands for grants, where it has to discuss? Sir, my point is that this corruption, sir, I talk about the Adyur Vengalam, sir, 45 crore per kilometer. You see Talapadi to Changala, there are only 43.7. There were 7 major bridges and 17 grade separators are there. This road is very plain. There are 17 bridges are there. There are only 43 crores. Kappirikad to Talikulam, similar geography, cost only 35.1 crore. Sir, this is a clearly loot, legalized loot, sir. This is a legalized loot, sir. Sir, we have to discuss. Then every day, Honorable Minister itself sometimes told that everything is going wrong. Honorable Minister already told. Sir, my point is that, sir, this should be investigated, sir. This should be investigated. Because this is our public money, sir. Public money cannot be taken away by some individual, sir. Sir, there should be a scrutiny, there should be an investigation, sir. We are demanding for an investigation. With these words, I am concluding my speech, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Honourable Member. Sri Alok Kumar Sumanji. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर
2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपए के शुद्ध नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है। यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रुपए का एक हिस्सा है। हालांकि 90,812 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंत्रालयों ने आंतरिक बजट से एडजस्ट की जाएगी। शेष राशि 41,455 करोड़ रुपए के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल आवश्यक है। महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण की योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया गया है। वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है महोदय, जिसमें एलपीजी बिक्री कर पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रुपए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रुपए, होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रुपए दिए गए हैं महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी का 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जो इम्प्रेसिव है एवं देश के राज्यों एवं अन्य सबों के लिए यह इनकरेजिंग है। यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण संभव हुआ महोदय। आप आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है और हम जल्दी ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20% होने जा रहा है। आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4% होने की उम्मीद है। महोदय, देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड फंड जुटा रही हैं, हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं, देश में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, देश की करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है। आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए मार्केट में लगा रहे हैं। महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफ़ी आगे बढ़ा है। 5G स्टैक देश में ही विकसित हुआ और हमने मेड इन इंडिया 5G भी बनाया और आज हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो चुकी है महोदय। महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सब्या एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए। महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए हैं महोदय। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है महोदय। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है।
चीन का 33.4%, ब्राज़ील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री बजरंग सोनवाने जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे बोलने के लिए मौका दिया। आज मी या सभागृहात जे बिल आलं त्या बिलावर बोलताना भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ज्याची गणना केली जाते, या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही मागण्या आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी भारत सरकारने नवीन काहीतरी वाढ केली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा होती। पण आता माग करताना भारत सरकारने त्याच्या बाबतीत काही मागणी केलेली नाही। शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ग्रँट या नवीन ग्रँटमध्ये द्यावेत ही एक माझी मागणी आहे। एवढंच नाही तर साहेब, माझ्या महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये धाराशिव बीड संभाजीनगर या रेल्वे मार्गासाठी अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागच्या 2014ला मोदी सरकार आलं तेव्हापासून जुन्नर चोंडी आष्टी असा एक रेल्वे मार्ग आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा नवीन पैसे दिले पाहिजेत, बजेटमध्ये तरतूद केली पाहिजे। बऱ्याच दिवसापासून मागील 14-15 वर्षापासून अहिल्यानगर बीड परळी रेल्वे हा पण एक मार्ग आहे। या मार्गासाठी बजेट देऊन सुद्धा काम वेळेत पूर्ण होत नाही। त्याला जर बजेट कमी पडत असेल तर ते जास्तीत जास्त दिलं पाहिजे। आणि अध्यक्ष महोदय, संबंध या सभागृहातील MP जे आहेत, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, यांचा जो निधी आहे हा निधी अगदी कमी आहे साहेब। माझ्या महाराष्ट्रात जर बघितला तर MLAचा जो निधी आहे, जो फंड आहे, हा फंड 5 करोड रुपये, म्हणजे 6 माझ्या खाली म्हणजे कमीत कमी 30 करोड। माझी एवढीच मागणी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये 30 ते 35 करोड निधी वर्षाला तुम्ही MP लँडचा दिला पाहिजे अशी माझी या सभागृहाच्या वतीने आपल्याला मागणी आहे। साहेब, अध्यक्ष महोदय, आपल्या भारत देशामध्ये पोस्ट ऑफिस एक दळणवळणाचं खूप मोठं साधन होतं, पण पोस्ट ऑफिसेस बरेच काही बंद आहेत। त्याला नवीन पोस्ट ऑफिसेस काही माझ्या बीड जिल्ह्यामधील माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये झाले पाहिजेत अशी माझी मागणी आहे। आपल्याकडे मोबाईलचं युग आलंय, मोबाईलच्या युगामध्ये आपण मोबाईलवर आता पूर्ण जग चाललंय। या सर्व गोष्टी करत असताना माझ्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये आणखी बऱ्याच भागामध्ये मोबाईल टावर्स नाहीत। महाराष्ट्रामधील बऱ्याच भागामध्ये हिल एरियामध्ये मोबाईल टावर नाहीत, त्याच्यामुळे मोबाईल टावरसाठी सुद्धा अतिरिक्त ग्रँट देऊन मोबाईल टावर झाले पाहिजे ही माझी मागणी आपल्याला आपल्या माध्यमातून सरकारकडे आहे। त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग आमचे नितीनजी गडकरी साहेबांनी खूप मोठा देशामध्ये जाळं निर्माण केलं, पण साहेब काही माझ्या मतदारसंघामध्ये आणखी 4 लेन करण्याचे बाकी रस्ते आहेत। 548D 548C त्याच्यासाठी 4 लेनिंग आणि 6 लेनिंगसाठीचे एक नदी द्यावा अशी सुद्धा माझी मागणी आहे। साहेब, महाराष्ट्रामधील आरोग्य व्यवस्था पूर्ण ढासळलेली आहे। केंद्र सरकारनं आरोग्यासाठी सुद्धा इमारत असेल किंवा मेडिकलसाठी असेल, सिटी स्कॅनच्या मशीन असतील, अशा काही विविध योजना महाराष्ट्रासाठी दिल्या पाहिजेत अशी माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी आहे। एवढंच नाही तर मेडिकल कॉलेज माझ्या इथं प्रत्येक जिल्ह्याला एक नवीन मेडिकल कॉलेज द्यायचं हे केंद्र शासनाचं धोरण आहे, पण माझ्या जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज नाही, हे मेडिकल कॉलेज द्यावा ही एक आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे। साहेब, शिक्षणाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, आर्मी स्कूल याच्यासाठी निधी कमी पडतो, याच्यासाठी
त्यासाठी सुद्धा अतिरिक्त निधी दिला पाहिजे. माझ्या गोरगरीब जनतेच्या लोकांचे मुलं तिथं शिकले पाहिजेत. माझ्या जिल्ह्याच्या बाबतीत, माझ्या एका निर्वाचन क्षेत्राच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर माझा जिल्हा महाराष्ट्र नव्हतं सबंध देशाला ऊसतोड मजूर पुरविणारा जिल्हा म्हणून ज्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यातील माझ्या ऊसतोड मजुरांचे जे मुलं आहेत, या मुलांसाठी एक शाळा प्रत्येक कारखान्यावर किंवा फिरती शाळा तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा आणि शाळा द्याव्यात, ही माझी एक कळकळीची विनंती आहे साहेब. एवढंच नाही तर आपला हा भारत देश हा ग्रामीण भारत देश म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण एरियासाठी, रूरल एरियासाठी ग्रामपंचायत ही सर्वात महत्त्वाचं केंद्रबिंदू आहे. या ग्रामपंचायतसाठी इमारत नाही. ज्या ग्रामपंचायतमधून आपण आपला जसा मुख्यमंत्री एका स्टेटचा असतो तसा त्या गावचा तो मुख्यमंत्री आहे, पण त्याला तिथं बसायसाठी जागा नाही, खुर्ची नाही, इमारत नाही. इमारतीसाठी सुद्धा केंद्र सरकारने अधिक निधी द्यावा असं माझं प्रांजळ मत आहे. साहेब, पंतप्रधान घरकुलची योजना आहे, पंतप्रधान आवास योजना, या योजनेसाठी आपल्याकडे तुटपुंजा निधी आहे. साहेब, आपण त्याचा निधी वाढवला पाहिजे. एका गरीबाचं घर जर व्हायचं असेल त्याला 5 लाख रुपये निधी अध्यक्ष महोदय दिला पाहिजे, ही माझी अत्यंत कळकळीची विनंती आहे आणि आपण सरकारला सांगून ती द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. एवढंच नाही साहेब, घर घर जल पहुंचाने की केंद्र शासन की या मोदी सरकार का एक ये जल जल कहाँ पहुंचा घर. अभी जल जीवन मिशनचं 3, 13, 9, 12 वाजलेत, जल जीवन मिशन बंद पडले, त्याला पैसे नाही साहेब, पैसे लवकर द्या. अध्यक्ष महोदय, आपण आपल्या माध्यमातून सरकारला सूचना कराल की त्याला जल जीवन मिशन या योजनेला पैसे द्याल. एवढंच नाही तर MREGS सारखी एक प्रचंड मोठी योजना आहे जी की गोरगरीब जनतेसाठी, महाराष्ट्रातल्या माझ्या देशातल्या गोरगरीब मजुरांना मजुरी मिळते. ह्या MRE योजनेसाठी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये MREGS बंद केले साहेब. त्याला केंद्राचा 100% पैसा असताना सुद्धा पैसा दुसरीकडे वळवला जातो आणि त्याच्यावर खर्च होत नाही. त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला की हा निधी जास्तीत जास्त त्याच्यावर खर्च झाला पाहिजे. माझ्या गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे. एवढंच नाही साहेब, आदिवासी ट्रबल आहेत, जे की दलित आहेत, यांच्या सर्वांसाठी वसतिगृह, केंद्र सरकारचे काहीतरी वसतिगृहासाठी निधी दिला पाहिजे आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वसतिगृह झाले पाहिजेत. आणि शेवटची अल्पसंख्याकांसाठी एक माझी डिमांड आहे की अल्पसंख्याक मुलं असतील, मुली असतील, मुस्लिम समाज असेल, त्यांच्या शाळा कमी आहेत, कॉलेजेस नाहीत, त्यांच्यासाठी हॉस्टेल नाहीत, तर ज्या ज्या बिग सिटी आहेत तिथं हॉस्टेलच सुद्धा दिले पाहिजेत अशी माझी मागणी आपल्या मार्फत सरकारला आहे आणि याच्यासाठी नवीन ग्रँट्स द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद जी. माननीय श्री सदस्य रवींद्र वाईकर जी. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 की पूरक मांगदान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के पहले बेंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया. इसके लिए मैं आपका सर्वहृदय से आभार व्यक्त करता हूं. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल रक्षा की है बल्कि उसे नई ऊंचाई पर पहुंचा है. महोदय, अब मैं सदन के पटल के रखी हुई पूरक अनुदान मांगों पर आता हूं. महोदय, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 41,455 करोड़ रुपए की अतिरिक्त यानी नेट एडिशनल स्पेंडिंग की मांग की है. मैं सदन का ध्यान 7 प्रमुख आवंटनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. यानी उन्होंने पहला जो आवंटन किया है फर्टिलाइजर सब्सिडी यानी 18,528 करोड़ का आवंटन वहाँ किया है. महोदय, कुल मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 18,528 करोड़ रुपए केवल उर्वरित विभाग के लिए आवंटित किया गया है. आज दुनिया में खाद की कीमतें आसमान छू रही है, युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ हमारे किसानों के कंधों पर नहीं पड़ेगा, दिया जाएगा. ये राशि यूरिया P&K के उर्वरित सब्सिडी के लिए है ताकि हमारे अन्नदाता को खाद सस्ती दरों में मिल जाए. दूसरा आवंटन जो किया है पेट्रोलियम LPG के ऊपर यानी करीबन 9,473 करोड़ का पेट्रोलियम मंत्रालय के लगभग 9,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं. उसका उद्देश्य तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करना है ताकि जनता को रसोई गैस और ईंधन उचित दामों पर मिलता रहे. साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन जारी करने के लिए ये आवंटन किया गया है. ये बजट का कुशल प्रबंधन है. तीसरी जो आवंटन किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास करने के लिए यानी 3,028 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए 340 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया. उसमें से इसमें लद्दाख में बिजली खरीदना, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है.
हम सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के लिए 1226 करोड़ का आवंटन किया है। भारत की ग्लोबल छवि और कूटनीति के पहुंच के मजबूत करने के लिए 1226 करोड़ रुपए की मांगे है। इसमें हमारे पड़ोसी मित्र देशों में जैसे मॉरिशस हो, जैसे पैसिफिक आइलैंड देशों की सहायता और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए योगदान शामिल है, जो रणनीति का रूप है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 1303 करोड़ का नींव रखी गई है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि हमारे डिम विश्वविद्यालय के, जो अभी एक ही सदस्य ने कहा कि कॉलेज और ये स्टडी ये होना चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालय और प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे क्रांतिकारी योजना के लिए, जिसमें हमारे छात्रों और शोधकर्ता को दुनिया के बेहतरीन रिसर्च पेपर्स मुफ्त उपलब्ध हो जाए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आयकर और बुनियादी ढांचे के लिए देखिए, यानी फाइनेंस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1831 रुपए का आवंटित किया गया है। उसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, आईटी विभाग के लिए आधुनिक कार्यालयों का निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ताकि करदाताओं को बेहतर सुविधा मिले। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और राज्य देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, वो महाराष्ट्र है, वो मेरी मुंबई है। उसके कुछ ज्वलंत समस्या और मांगों को आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। मुंबई देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन मुंबई की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक केंद्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम बजट में कहा था कि हम लोग घरकुल के लिए, देश के घरकुल के लिए, पीएमवाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत रख देंगे, 10 लाख करोड़ की लागत रख देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 की लागत देंगे। तो उसी में का, जैसे मुंबई केवल एक शहर नहीं बल्कि एक मेगा रीजन यानी एमएमआर बन गया है। महोदय, लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन अब हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में बदलने की सख्त जरूरत है। मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी अभी तक एक चुनौती है। मेरी मांग है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट एमयूटीपी के अगले चरणों के लिए बजट आवंटन किया जाए। हमें ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी का ट्रैफिक में बर्बाद होने वाला समय बचे। मुंबई हमारी नॉर्थ वेस्ट बड़ी हुई है, तीनों तरफ समुद्र है, एक बाजू हिमालय की पर्वतरांगा है। जो हमारा एरिया है 493 चौरस किलोमीटर, और मुंबई के जो रोड है वो 2005 किलोमीटर के है, मगर वो अभी पूरे नहीं गिरे। ताकि ये ट्रैफिक के समय बचने के लिए उसके आर्थिक लागत की जरूरत है, केंद्र शासन में ध्यान दिए। वर्सावा जेटी का आधुनिकीकरण, मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्सावा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कोलीवाड़ा यानी मछुआरों की बस्ती है। यहाँ की जेटी की हालत बहुत जर्जर है। हमारे मछुआरे के भाई बहन को मुंबई के मूल निवासी है, उन्हें अपनी नावें खड़ी करना और मछली उतारने के भारी कठिनाई होती है। मेरी मांग करता हूँ कि सागरमाला परियोजना के तहत वर्सावा जेटी में आधुनिकीकरण विस्तार के लिए विशेष फंड जारी किया जाए। साथ ही मुंबई में जल वाटर मेट्रो, जैसा मैंने कहा, हम लोग कोची गए थे जहां वाटर मेट्रो की सुविधा है, उसी प्रकार से रोरो सेवा का विस्तार मुंबई शहर में होना चाहिए। सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, महोदय, मुंबई रोज करीबन 6,500 मैट्रिक टन कचरा पैदा करती है। देवनार और डंपिंग ग्राउंड अब कचरे से पहाड़ बन चुके हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ है। बार बार यहाँ आग लगती है और जहरीली धुआं फैलती है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए कि मुंबई महानगर पालिका को विशेष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करे। हमें कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को जल्द से जल्द अपनाना होगा। सभापति महोदय, जल निकाय का कायाक्रम यानी रीजनरेशन ऑफ वाटर, मुंबई में नदियों और तालाबों का शहर कहा जाता था। आज मीठी नदी नाले में परिवर्तित हो चुकी है। पवई झील और यानी कचरे का कूड़ा बन गया है, यानी सीवर का पानी वहाँ डायरेक्ट जा रहा है। मेरी मांग करता हूँ
गंगा की सफाई की गई है, उसी प्रकार ही मिठी नदी की भी सफाई कर दिया जाए। मुंबई में जल निकाय के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाए। जब तक हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, मुंबई बाढ़ और जल जमाव की समस्या मुक्त नहीं सकती है। दमन गंगा और पिंजर और मेरे को 2 मिनट चाहिए सभापति महोदय। जल की जो मुंबई यानी गारगाई यानी पिंजर, उसके माध्यम से मुंबई में पानी लाना बहुत जरूरी है। मुंबई की आवश्यकता अभी जो है 4,400 दशलक्ष लीटर की आवश्यकता है, हम देते हैं 3,800 दशलक्ष लीटर पानी। तो गारगाई एंड पिंजर ये 2 धरण जो बांधे जाएंगे शासन के माध्यम से, तो मुंबई के लिए फायदे का होगा। उसी प्रकार कोकण रेलवे जो सिंगल ट्रैक पे चल रही है, हालांकि विद्युतीकरण काम पूरा हुआ है, लेकिन अब तक पूरी लाइन 2 पदरी एंड डबल लाइनिंग नहीं होगी, कोकण का विकास अधूरा रहेगा। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि रोहा से मडगांव तक उस दोहरीकरण के लिए बजट समेटा जाए। उसी प्रकार के खाली घुसपैठी का एक पॉइंट है मेरा महोदय, ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा मुंबई के अस्तित्व से जुड़ा है। मुंबई और उस में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। लोग न केवल झुग्गी झोपड़ियों में अवैध कब्जा करे, बल्कि स्थानिक नागरिकों को संसाधन, पानी, राशन और रोजगार पर डल्ला मार रहे हैं। यह जनसंख्या परिवर्तन भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। मैं गृह मंत्री से मांग करता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र में एनआरसी की तर्ज पर एक अभियान चलाया जाए, अवैध घुसपैठियों को पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित यानी डिपोर्ट किया जाए, ये मेरी मांग है। उसी प्रकार मुंबई में एम्स की स्थापना करना चाहिए कि सब देश से कैंसर के इलाज के लिए हमें मुंबई में आना पड़ता है कि एम्स की मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। किफायती घर यानी एफोर्डेबल घर और भाड़े के घर मुंबई में ज्यादा से ज्यादा पीएमआई के माध्यम से लाना चाहिए, ये मेरी मांग है। अंत में यही कहना चाहता हूं, ये पूरा भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला बजट है। सबका साथ सबका विकास के लिए मंत्र को चरितार्थ करता है। मुंबई और महाराष्ट्र की इन मांगों को विशेष एम की स्थापना पर सरकार सकारात्मक रूप अपनाए, इसीलिए इसी में मांग करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सिंह जी सामने। मैं आसन और सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि अभिव्यक्ति के ये बहुमूल्य सूक्ष्म क्षण मुझे प्रदान किए। आदरणीय, इस पूरी अभिलेखों के प्रति जो व्यापक व्यवहार चिंतन के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें गंभीरता के वो क्षण भी समाहित हैं जहां वैश्विक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष का उदासीन वक्तव्य इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित छवि होनी चाहिए उस पर कहीं आखेट हुआ है। अभिव्यक्ति के वो क्षण सदन की सत्यता की विषय को और सारगर्भित मर्यादा की व्यवस्था को संपादित होने चाहिए थे, लेकिन इस बात का अचरज होता है कि कैसे शब्द के व्याकरण की वर्णमाला को प्रस्तुत करने में सच को व्यवस्थित तौर पर न प्रस्तुत कर एक ऐसा अंश प्रस्तुत किया जाए जो सच का आधा हो और सत्य के संपूर्णता को परिभाषित करने में कहीं न कहीं कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं इस बात के लिए बड़े आदर से सभापति महोदय आपसे विवेचन करता हूं। सम्मान्य निशिकांत जी दुबे ने यह बात बिल्कुल सही कही कि 216 के माध्यम से जब आप अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हो तो आपकी सीमा अनुपूरक मांगों तक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि व्यापक चर्चा भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिदर्श करते हुए विवेचन के रूप में प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत कर दी, तो यहां मैं एक बात आपके बीच में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत की स्थिति आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था,
और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने भारत की वर्तमान सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ आज आर्थिक विवेचन, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र की व्यवस्था को विमोचित करने का पारदर्शी मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष इस बात के लिए बार बार अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि कहीं भी इसमें सफलता की चिंगारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आदरणीय, उसी अमेरिका जिसके डॉलर के संबंध में इतनी चिंता व्यक्त की गई है, मैं वहीं के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा वो विवेचन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, what do you do when the world's largest democracy decide it no longer needs your permission? उन्होंने अमेरिका के लिए कहा है कि how does America have to behave? India, the world's largest democracy, feels it doesn't require anyone's permission. You push back. This isn't about just tariff. It is about control. And right now, India is breaking free. The United States knows it, and it sits nervous. US President has threatened tariffs on Indian exports. The official reason, trade imbalance. The real reason, India is rising fast and Washington doesn't like what it can't control. Now, why are they not in a position to accept this? Instead of targeting the government of India, its proper deeds, why are they not accepting this fact? Somebody wants to control you with Mr. Narendra Modi. It is not possible. यहाँ इस बात की व्यवस्था को हमें अंजाम देना पड़ेगा। I'll just, please let me know when my time runs out. भारत की स्थिति क्या है? हम अपने ही शास्त्र उचित चरित्र की मर्यादा में जब वैश्विक व्यवस्था का परिलेख देखने की कोशिश करते हैं, तो भारत की स्थिति आपको ठीक वैसी नजर आती है जो महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपनी मैत्रिक संधि के माध्यम से कुरु के राष्ट्र को एक मैत्रिक रूप में एक विवेचना प्रस्तुत करी थी। आदरण, जब अहंकार परिस्थिति के परिदृश्य में सर्वोपरि हो जाता है तो विनाश की शुरुआत होती है। इस महाबली राष्ट्र जिसको आप अमेरिका के नाम पर उसकी डॉलर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जब अहंकार के अंगारे से वो अपने बात को राष्ट्र में और संसार में प्रस्तुत करना चाहता है, तो भारत के शास्त्रीय उचित मर्यादा और चरित्र इस बात का आगाज करता है कि प्रतिरोध होना चाहिए, सदन में भी होना चाहिए और संसार के पटल पे भी होना चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा सर, मैं आपके बजट की अभिलेखा तक आ जाऊंगा और सूक्ष्म बिंदु तक आ जाऊंगा। आपने ये बात बड़े तर्क से कही, तो आर्थिक स्थिति के अंदर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी मैं निवेदन कर देता हूं, और अगर आपको अनुचित ना लगे तो आप उसको लिख लेना और वापस देख लेना। While unprecedented geopolitical has surfaced, आज से पहले आपने इस स्थिति को नहीं देखा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। The fundamentals of the Indian economy remain strong. The foreign direct investment in India rose by 18% from year to year, अगर आप बैक से देखें तो, to 35.18 billion during April-September of this fiscal year, while the inflow from US more than doubled to $6.62 billion during the period. According to the latest government data released on December 1,
investment from overseas during April to September period of the previous fiscal year stood at 29.79 billion. During the preceding June-September quarter 25-26, the inflow increased by over 21%. I am not saying, sir, I have not conjectured this figure. Even if I wanted to, I couldn't have put it in this way. The question is, why aren't we in a position to accept the reality? आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के लिए 11,000 करोड़ तो आपने फॉस्फेट और उसके लिए मांगे, और यूरिया के लिए आपने मांगे तकरीबन 20